वो है कि trains अरे we are already streaming live on YouTube. Yes, we are starting, sir. अच्छा चलो. Okay. Pawan sir. Am I audible clear? Sir, should I start? Yes. Please, sir. Okay. This is better or without this? Yes. Pawan sir, please start recording our today's meeting. Then start. Yes, sir. Arpit sir, good morning. Good afternoon. Right now we are having more than 55 members and more members are also joining. So let's start with the program. Pawan sir, can you start the recording? Am I audible? Yes. Recording is start, audible. Sir. Recording start. Cloud पे सर करना है कि कंप्यूटर पे करना है? Cloud. कंप्यूटर में करूँ? Start. Yeah, start it. Yes, Pawan sir, please go on. I, CA Pawan Jaju, Secretary Amravati Branch, welcome you all in such a good, lovely, cool rainy day. It's raining in Amravati and we are all enjoying the session. Hope you are also enjoying the session. Today we have 3 sessions. Session 1, Forensic Audit Tool. For this we have Regional Council Member C. Arpit Kabra sir. He is with us. I welcome you, sir. Then second session is on research methodology and tools for CAs. For this session, we have speaker CA Mayur Jawar, sir. I welcome you, sir. After both the session, we are having third session with WRC. WRC interactive meet is there. This is the line of action for today's city meeting. So without taking much time, we start with the session. First of all, as a protocol, I request our chairman, sir, CA Vipul Patel, sir, to give an introductory remark. Thank you, Pawan bhai, Secretary Amravati Branch. First of all, excuse me, I'm sitting in dark. Actually, there is a power cut in my area. So good afternoon, one and all. On the behalf of Amravati Branch, first of all, I welcome both the speaker, CA Arpit bhai Kabra, who is our branch nominee also and today's chief guest speaker. And second speaker, CA Mayur bhai Zawar, and all the members. Friends, as you know, forensic audit is one of the sought after specialized field for chartered accountant nowadays in India. The scope of forensic audit in last 5 years have grown up significantly due to various continuous reform in banking industries. Most of the public sector bank requires audit of their large borrower to be done to identify whether it is a genuine business loss or a willful defaulters. Nowadays, if you observe carefully, bankers are now under constant pressure from various investigation agencies to done their accounts by the forensic auditor. So forensic auditing is becoming essential nowadays. Various other agencies like NCLT, Economic Office Wing, Serious Fraud Investigation Offense, SEBI are also required services of forensic auditors. So forensic audit professionals are in good demand in India, and scope is going to increase further as reforms in Indian financial sectors continues in future too. Coming back to our today's second session on various research methodologies and tools available for chartered accountants. Friends, as you already know, our own member CA Mayur bhai Zawar is already nominated in WRC research committee and also having a deep interest in taking various research project related to our professions. And we at Amravati branch already submitted 2 research papers to WRC research committee, one by CA Mayur Zawar sir on Indian accounting railways and other from Aditya Khandelwalji on GST, of course. So I am very happy to inform you all that various incentives are also available for the members who are showing interest in our research activity. So that's why we at Amravati branch felt that necessary to take this seminar on this very important topic to make our members aware about the various opportunities and avenues available in this field too. So on the behalf of Amravati branch, I am thankful to both the speakers for taking your time out for guiding our members on such important topic. I'm sure, sir, both of you, sir, I'm very much sure, sir, members will be immensely benefited from your deliberations. And after the virtual committee meeting, we are having a WRC interactive meeting. As I earlier said, if you have any questions, queries, or concerns to WRC or ICF,
please inform us in advance. We will raise before the WIRC. Thank you. Thank you all. Over to Pawan, sir. Thank you, Vipul, sir. Now let's start with the session. First of all, I request CA Saket Bhai to please introduce our today's first speaker, CA Arpit Kabra, sir, a man who needs no introduction, but as a protocol, I request Saket Bhai to please introduce Arpit, sir. Yes, sir. Good afternoon to everyone present over here on our today's virtual session on forensic audit tools and research methodology tools for CA. I, CA Saket Mehta, would like to introduce our today's eminent speaker, CA Arpit Ji Kabra, sir. Before his introduction, I would like to say 3 lines for him. Sir is a silent in behavior, innocent by face, and always ready to help others. Sir has completed his BCom and he is qualified as CA and CS in 2009. And and after completing his 12th from science, he has shifted to commerce thereafter. He is the national head for forensics and risk management services at JC Kabra and Associates Chartered Accountant, having offices in Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Kolkata, Hyderabad, and Surat. He is the mentor to 3 startups in India. He has worked on various high-profile cases for bank, CBI, and EOW. Currently working with 2 state governments and assisting investigation in financial fraud involving big names. He had worked earlier with EY, Deloitte, Hari Bhakti and Company, Bhuta Shah and Company, and R. Kabra and Company. He is the trainer and coach for soft skills and life management. He is also speaker at various forums for technical and motivational sessions, and he is a visiting faculty at SP Jain Institute of Management and Research for Management students. He had conducted over 25,000 hours of training for young CA and CA students during this lockdown period on topics including information technology, soft skills, reporting, and technical other subjects. He had also conducted over 300 sessions of management training for students and professionals, and also counseling sessions for various colleges in Mumbai. He has also interest in the fields of driving, dancing, and practicing meditation. He is a keen art of living follower and committed to spread the power of meditation to every youth of our nation. He is also exploring technology and new developments in robotics and to lead in soft skill development and empowering young CAs for new opportunities. As we also know that Sir is the regional council member of WRC and he is playing a vital role in various positions as the chairman of Digital Accounting and Assurance Board, the chairman of GMCS Coordination Committee, a vice chairman of Committee for Members in Industry and Business and Public Service Committee. And he is also the vice chairman of Career Counseling Committee. Now, I am presenting our today's eminent speaker before you for his valuable deliberation. Thank you, sir. Now over to C. Arpit Ji Kabra, sir. Thank you, Saket. Yes, sir. Thank you. Elaborate introduction and for doing it very well. Thank you, sir. Thanks for that. And as rightly mentioned by you, being it's a lovely time to be the chairman of our Digital Accounting Board Committee, because we can all see the wonders of digital accounting or digital technology right now in front of us. Before I can start, my greetings to all the members out here. One thing Saket just missed, or maybe was already covered by Vipul Bhai. I'm the branch nominee of this lovely, holy, and that I started my career as a regional council member with. And the team started. The first thing that I was here was first thing that I did while you were on a visit, and we did it back to back for next students conference also. So far, it's been a great place too, and it is so good today. आप लोगों से मिलना, आप लोगों को देखना, really it feels very good. And जैसे कि बताया कि बारिश हो, even the climate is so good for us कि आज हमारी meeting हो रही है, so it is ensuring that we don't have any problems. The heat
क्योंकि अमरावती is known for its heat. So it's good कि आज of course we are in June, so it's raining and that's the best part. Thank you, Vipul Patel, my brother and also chairman of this dynamic branch, very dear friend of mine also, for giving me this opportunity to address us. Sunil ji, I can see. Pawan Jaju, I can see. Also, I just saw a message of our immediate past chairman Khandelwal ji. Sir, if you are there, please switch on your camera so that we could see you. It's been a long time. So. And Prakash Vardhe sir also is there, I suppose. So it's good to see all the faces. While we start, maybe we could see all of you, and then when we start, maybe I'll fire my presentation, so we can then switch off the cameras. But this is the entire idea of having a digital meeting, so that at least we see each other. Otherwise, lockdown has really made life very, very different than what it was usually. Uh, Also, I would recognize Mayur Bhai, almost a senior faculty and a very, very expert in his subject. Thank you, sir, for it's a privilege to present before your home crowd along with you. So, and I'm sure I'm more keen to hear from you also. I've heard you in the past, so it's a great feeling that I'm sharing this dais, if so called, with you today. Um, and all the lovely people who have taken out time today and joined us on this conference. Welcome all of you again. So today, so yes, as rightly someone hinted now, this entire lockdown has created a different area as such, specification as such that we should all focus on. Is one thing is after knowing how to greet each other, how to talk to each other, how to present each other, etiquettes हमने बहुत सारे सुने हैं. So there is now a webinar etiquettes. So this is something which is very important. Believe me, friends, आप लोग सब जो भी आज join किए हैं, I would request all of you to please ensure that you are on mute, because बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने join किया है, they have taken their precious time out. So it's a very strong investment. Our time is so important. Although we don't realize that as an opportunity cost, but today time is so important for us, especially given the space that we hardly can stay out. So अगर आप सब लोग का time आज इधर है, तो I would request कि during the presentation थोड़ा सा भी disturbance होता है और वो है ना link टूट जाता है, that would be really not very good for all of us. So think about those people who really want to take some learnings from this session. All of them may not, but some who are there, at least let's respect their time and their efforts to focus on the presentation. So request all of you to stay mute. Also, any questions that you might have, I'll be trying to cover everything very, very systematically. And on the start of the session also, I will tell you that as I start my PPT for forensic audit today, something as Vipul Bhai already mentioned, one of the biggest areas, one of the biggest scope, one of the biggest out of the box areas that are chartered accountant today, and irrespective of any place, there were so many other opportunities that we always think about कि यार ये सिर्फ बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है. This कहीं भी हो सकता है. Forensic audit ऐसी चीज है जो कहीं पर भी कोई भी कर सकता है. And we chartered accountants are the best persons to get into the fit into the scheme of identifying frauds in financial areas. वो सब मैं आपको कवर करूंगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर कोई क्वेश्चन हो आपको एनी टाइम ड्यूरिंग दिस, प्लीज यूज द चैट बॉक्स. आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव एन इंटरेक्टिव सेशन, तो मैं बीच बीच में आप लोग से इंटरेक्शन मांगूंगा, मे बी आपसे कोई इनपुट मांगूंगा. सो प्लीज फील फ्री टू टाइप ऑन योर चैट बॉक्सेस, दैट विल कीप यू एक्टिव ऑल्सो एंड विल नॉट मेक दिस सेशन मोनोटोनस. और ऑफ कोर्स कहीं पर भी आपको लगे कि बहुत बोरिंग हो रहा है, तो प्लीज गिव अ हिंट. सो आई वुड रिक्वेस्ट पवन जी द सेक्रेटरी कि अगर कहीं से भी ऐसा हिंट मिलता है आपको व्हाट्सएप पे या ग्रुप में अमरावती के, तो पहले ही बता देना. इट इज यूजुअली सेड we should be wise enough to know when to quit and rather extend it. So I hope we have a very lovely evening today, and I'm going to start my presentation. Can someone please respond if it is visible, if my slides are visible to you? Yes, sir, it is visible. Yes. Right. I'm just putting into the slideshow mode.
I hope the entire screen is on my PPT, right? Or anything else which is also visible? Sir, zoom it, no? नहीं बस अब आ गया? अभी भी नहीं. हाँ, sir. Now it should. Yeah, good. So the entire Yeah. screen you can see on my Yes. presentation, right? Yes. Yes, Yes. sir. All right. Thank you. So friends, starting with this approach to forensic audit, ये the image itself, जो सबसे पहले जो cover image मैंने use की है, it is for us to understand what is the importance of this lighthouse. ये lighthouse वही काम करता है जो आज हम लोग कर सकते हैं, as in the sea of, in an ocean of frauds, in an ocean of financial indiscipline that is happening. We have to throw light. Yeah. And for that we have to make sure that we are in between that ocean, just like ये island है, हम वो sea के बीच में हम आते हैं, वहाँ से we are able to cover a very large area, especially things which are about to hit us. We should first identify them. We should be sure about what is hitting us, right, and then take enough steps to ensure it is stopped there and there. So therefore, the theme of my presentation is how to be very observant. Well, this is what is Amravati for me. You know, I miss all of these things. All the famous things of Amravati, Samarwadis, you know, Amba Devi Temple, of course, to start off. Our institute, ICI Bhavan, the branch premises, and this where DD Khan sir has always parked us. Wonderful place, Mehfil, Grand Mehfil rather, and of course the textile market. I miss that. I didn't get a big photograph of that textile market, but I'm sure among so many other things, these are one of those things. Busy land, sir. Sorry. Busy land market. Oh yeah, busy land. Right. उसका image नहीं मिला, otherwise I would have put that also. But these are the things that I thought when Amravati comes in. So you know, oh, it's come here also. So this is one space. This image signifies the vision that a chartered accountant can have. You know, wherever you are, believe me. So this is the skyline of Mumbai. This is from a place where we have done a forensic audit recently, and you know, this place struck me so hard. Ki aaj, if I'm anywhere, anytime, from standing from here, I can have a very good view of what that person is doing. This is an ocean. This entire financial world is just like a big ocean. जैसे हमने लाइट हाउस की बात की, वैसे someone remember, you know, chartered accountants. So given that in the past 2 years, 2.5, 3 years rather, we've almost completed around 180 plus forensic audits, and you know, my experience largely says that, you know, there have been so there's no one parameter which ensures financial frauds happen. Forensic audit is a very different art of identifying that one person who has done something wrong. You know, when you identify that, most of the things get unsolved, most of the things get resolved. So एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम चाहे सीए हो या चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे ऑडिटर हो या चाहे कोई भी हो, there is someone who's always watching us. और वो अपने से ऊपर ही है, 100% ऊपर ही है, और somewhere उसकी position ऐसी है कि he is always above us and he is always constantly watching us. So this is to identify that. Now coming to our topic, and you know, coming to the contents that I'm going to cover today. First is we'll cover background of forensic audits and frauds. Second, we are going to cover why and where of forensic audits. कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ रही है हमको और क्यों. Then I'm going to cover about approach, exactly how should you approach for doing a forensic audit whenever you get a chance. And fourth, I've got some and illustrations. These are my live cases जिसका हम लोग ने you know, case study बनाया है, modus operandi बनाया है. So just to highlight कि you know, what all can we do right now as a statutory auditor, as a concurrent auditor, as any other auditor. We need not be to identify any fraud. And the last one is key takeaways. So friends, on background to forensic audit, one thing I would like to tell you is, you know, as Saket mentioned that then I did my commerce. Maheshji, can you please go on mute? Maheshji?
महेश कुमार जी, I don't know. तो यू नो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि साइंस करके कॉमर्स करके टुडे व्हाट आई एम डूइंग इज आर्ट्स, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कॉमर्स फील्ड दैट इट कैन लेट यू गो एनीवेयर एवरीवेयर. So today whatever that we are doing in forensics is absolutely an art. Forensic audit is an art, uh, which has three main ingredients. One is articulation, second is conceptualization, and third is observation. अगर आप ये तीन चीज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो ना, एंड आई एम गोना टॉक अबाउट इट मोर एंड मोर इन डिटेल, you can definitely do a forensic audit. And I'm telling you again and again, it is an art to work with psychology, to work with your observation skills, and to interact efficiently to identify when and who is lying and when and who is the culprit behind all of this. ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही आप फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हो आज, and I'll discuss and I'll give you enough evidences about the same. Now coming to background of forensic audit, what is a forensic audit? So forensic means suitable for use in the court of law. Simple है और कुछ नहीं करना है आपको. This definition, this entire paragraph today will tell you about forensic audits. And also एक चीज आप ध्यान रखिए, forensic audit अभी तक was only for cases in divorce, cases in murder, cases in insurance claims, or cases in some big criminal cases, you know, liability जहाँ पर होती थी. Civil liability के लिए बहुत कम forensic use होती थी. प्लस फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए इट वाज नेवर हर्ड. हर्षद मेहता स्कैम के बाद शायद ही कोई किसी ने सुना होगा. सत्यम ऑफ कोर्स एक अलग चीज था, बट फोरेंसिक ऑडिट इन फाइनेंशियल एरियाज, इन बैंक अकाउंट्स वाज वेरी अनहर्ड ऑफ. इट इज जस्ट अ रीसेंट 3 or 4 years कि this has been we have to learn forensic audit. And therefore the opportunity for us chartered accountants has increased manifolds, because यहाँ पर कोई और प्रैक्टिसिंग पर्सनल या कोई और इन्वेस्टिगेटर या कोई और इसमें बैठ नहीं सकता देन अस. इनफैक्ट इवन द पुलिस नीड्स अस, द EOW नीड्स अस, all of the agencies, be it SFI or be it CBI, anyone, they need us. No one else can help them in financial frauds than us, better than us. So therefore our opportunities here are immense. Or I'll talk about these opportunities also for all of us here. For friends, believe me, I don't know I'll be able to share this presentation to you or not. Of course I can, but while I'm sitting with you, and this is my humble request to all of you, please sit with a pen and paper and keep taking screenshots, or keep taking since you're on mobile or you're on technical platform, keep utilizing whatever I'm saying to you. If it is making meaning to you, if it is helpful for you, keep taking that screenshot then and there, yeah, so that it will stay with you. बाद में presentation आएगा, आप recollect करोगे नहीं करोगे, you never know. And keep making some notes. That way we'll all stay connected. And it is important because I'm telling you, I have taken a lot of help from people in Amravati to do a lot of way. So we've already in this entire area. So Nagpur is the if I can say a capital of stress assets, and we've got so many maximum opportunities we've done in Nagpur. Amravati we've done many cases. Akola we have done some cases. So henceforth, and each and everywhere, the best person that could have helped us is a chartered accountant in that local area, because they understand this area as so well, and they have access to each and every opportunity, each and every lead that we get in forensic audits so easily, that they are the best person suited to do a forensic audit. Yeah. So forensic means suitable for use in the court of law. और एक चीज और है, आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू सम ऑफ यू अर्लियर, सब लोग जिन्होंने मेरे को पूछा कि सर हम कैसे फोरेंसिक ऑडिटर बन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक ऑडिटर बनने की, इज यू हैव टू किल द ऑडिटर इन योरसेल्फ. हमने अगर जो भी सुना था कि वी आर अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, कौन हम लोग ने सुना था कि वी हैव टू जस्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जीरो. इसमें आपको कंक्लूजन देना है, because entire case, biggest of the biggest case will be fought on your presentation, on your verdict, on your observation, on your analysis, on your findings. आप यहाँ पर opinion नहीं दे सकते हो. You cannot give a opinion or forget about disclaimer. You have to be very sure that whatever you have, whatever you've got, you can use it in the court of law. It has to be watertight. थोड़ा सा भी रहा, lawyers will kill you. I mean, not literally, but I'm saying in the court of law, they will have a feast over you. मतलब वो आपको कच्चा चबा सकते हैं.
and that is what we are facing. And with every experience, of course, we are tightening ourselves. But here, friends, एक और चीज बहुत important है समझने की is why is so let me cover that area later on. But one thing is there, you have to kill an auditor inside you. जब तक आप वो नहीं कर सकते हो, it is very difficult to become a forensic auditor. And therefore, the young chartered accountants, the fresher chartered accountants, or probably the young ones who are just about to set into a practice or who are about to even adopt, they are the best suited people to do forensic audits quickly, because it is not settled into them that हमको सिर्फ opinion देना है. Tax audits में हमको सिर्फ बताना है to the best of our knowledge. Therefore, this is that kind of an area wherein you have to get something which is suitable for use in the court of law. Believe me, court of law only talks about one thing: sabut, evidence, nothing else. No stories, no theories, no nothing, no emotions. Only and only court of law, evidence. So it is the application of financial skill and investigative mentalities. Financial skill, we are the expert into. Investigative mentality is something, as I said, you have to practice arts. This is something that we need to develop, and kahin na kahin ye hum log mein hai, because we have studied so well, we have completed so many subjects. तो strategies बनाना हमको आता है, how to overcome कोई deadlines को कैसे meet करना, या कोई ऐसी situation आ गई income tax में कि उसको कैसे बच के निकलना. So we have all of that. और कहीं ना कहीं हमको अगर किसी को फंसाना है, वो भी हमको बहुत अच्छे से आता है, because we have that investigative mentality. And फंसाने से मेरा मतलब ये है to find out, observe or to find out such observations or evidences कि उसको हम लोग बोलें कि बॉस आप ये कर नहीं सकते हो, you cannot put it in front of me, or it is not my mistake at least. So investigative mentality to unresolved issues conducted within the context of rules of evidence. One another thing, friends, forensic audit, fraud is not defined anywhere. Unlike an income tax audit, unlike a statutory audit, we don't have a framework in which we have to do this audit. कोई guidance नहीं है, कोई direction नहीं है, कोई checklist नहीं है, कोई set pattern नहीं है. It is so dynamic, and therefore I said you have to start practicing something called as art. So if you have done science, commerce, and art, so it's a full round circle for me at least. ये पूरा करने में. As an emerging discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a sound knowledge and understanding to business reality. Who can do this the best? A chartered accountant. Sound understanding to business reality is the most important thing and the most keen aspect of a forensic. So बहुत सारी चीजें हो सकती है कि अगर मैंने ये बोल दिया कि ये JV पास की है, ये एंट्री पास की है, तो ये फ्रॉड है. Ideally yes, but as a chartered accountant we will know कि नहीं इसकी practical aspect क्या है, use क्या है, या why was it done. So understanding that business reality, understanding that practical exposure, understanding that scenario is something that we can do very well. And the working of a legal system. This, of course, we lack into, but we should catch up with that. Simply stated, forensic audit includes use of accounting, auditing, and investigative skills to assist in legal matters. Finally, ये एक ही है, legal जो proceedings हो रही है, उसमें आपको as a financial expert बैठाना है. As a forensic auditor, you'll have to start doing something for accounting, auditing, and investigation. Forensic audit can be conducted in order to prosecute a party for fraud, embezzlement, or other financial claims. In addition, an audit may be conducted to determine negligence. ये बहुत important word है, negligence. Anywhere, but you'll have to prove it. You cannot just say it. कि इसने मेरे को data नहीं दिया, ये negligent है. No, you cannot do that. A forensic audit is an examination of a firm's, entity, or individual financial information for use in evidence of court. So this summarizes, this entire slide summarizes a background or a basic of how and who can be a forensic auditor. Now, what are the distinctions between other audits? As I have already covered this, so maybe we can quickly go through it. So the objective is, one, in forensic audit, whether fraud has taken place in books. And here, the objective is express an opinion as to true and fair presentation, which at all we don't have to do over here. अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं. अच्छा, we'll cover it in the next third point. So techniques, substantive and compliance, sample based. This, my friends, cannot happen in forensic audit. आप कहीं पर भी ये statement नहीं बोल सकते हो कि on the sample basis that we have checked, on this that we've done. No, आप pattern ढूंढो. You find out a scenario, you find out a pattern. You need not do a full testing. Use tools, forensic audit tools. So Mayur ji, he'll speak next. Some of the tools that he'll talk about for doing some of these audits. Use these tools to create a pattern. क्योंकि जिसने भी fraud किया होगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना. फ्रॉड वही चीज हो रही है जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, नेचुरली ऑकरिंग है नहीं. सो जो चीज नेचुरल ऑकर नहीं हो रही है,
उसमें एक पैटर्न 100% मिलेगा, बिकॉज इट इज डन बाय ह्यूमन, इट इज डन बाय यू और मी, इट इज डन बाय समवन लाइक you or me. There definitely will be a pattern, but all you have to do is reveal or identify that pattern. So investigative, substantive और in-depth checking is required. Period. हम लोग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं दूसरी ऑडिट्स में. यहाँ पे फ्रेंड्स फॉरेंसिक ऑडिट में देयर इज एब्सोल्युटली नो पीरियड. इट कैन गो अप टू 6 years, 8 years, whatever. एंड जस्ट इमेजिन नाउ, आपको 1 साल की स्टैट्यूटरी ऑडिट करने में या इंटरनल ऑडिट कंप्लीट करने में, क्वार्टरली या जो भी है, आपको मिलते हैं 3 महीना, 4 महीना, whatever. 1 साल पूरा आप लेते हो पूरी ऑडिट करने के लिए. इन फॉरेंसिक ऑडिट you have to do almost 8 years or a 6 years period in just 180 days. Of course, बाद में beyond extend हो सकता है, ये वो various reasons होते हैं, but believe me, in 1 month or a 2 month period, you have to finish your forensic audits and you have to cover a period of 8 years in-depth checking. Very, very, very skillful and very, very enormous as a scope, and therefore the fees equivalent to that efforts. Now, verification of stock and all relies on the management certificate, management representation. In forensic audit, you can never, ever, ever rely on any expert. कोई मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन नहीं होता, कोई आप रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते, किसी भी कोई दूसरे स्टॉक ऑडिटर पे, इंटरनल ऑडिटर पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो. Everything you have to do independently. हाँ, if there are a lot of repercussions involved or if there is a lot of limitation involved, तब जाके कहीं at the end worst case scenario में you can rely on an expert. But in that account, you will never rely on any. In fact, not even a statutory audit report. In fact, in most of the cases we have seen, there are cases filed against a statutory auditor because he was hands in crime with those kind of people, those promoters. और वो एक है ना, मैंने case study भी ली है, so I'll take you through that also. How a statutory auditor becomes very important in in achieving the objective for a promoter. Off balance sheet items, so used to vouch the arithmetic. So ये vouching, arithmetic, compliance और ये सब zero. Unfortunately, forensic audits क्या है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि the first thing that you have to do is you have to kill a forensic statutory auditor in yourself. जैसे आप audit पे जाते हो एक forensic audit assignment पे, you cannot just start compliance लाओ, TDS लाओ, PF लाओ, मुझे ये पेमेंट बताओ, वो कराओ, ROC में फाइलिंग किया कि नहीं, फिर आपने ये किया कि नहीं, और all these different acts and compliances. No, that is not forensic audit, and you will not go. मैंने बहुत जगह देखा है, some of the auditors go on a forensic. आप मुझे एक्साइज रिकॉर्ड्स दे दो, आपने एक्साइज रिटर्न भरेंगे नहीं, आपने TDS के रिटर्न बराबर टाइम पे भरेगी नहीं, आपने HR ये क्या बोलते हैं PF काटा है कि नहीं, भरा है कि नहीं. All of that is not gonna prove fraud to you. They may become relevant if you find out if one of the areas in which leakage or funds have been diverted is using maybe 1 or 2 or 3 things. Then these records become important to you. So excise records, manufacturing records कब आएंगे? When you are sure कि कहीं ना कहीं मेरा जो matrix है, output input ratio, या कहीं ना कहीं I have a reason to suspect कि यहाँ पर जो production दिखा रहा है उतना हो नहीं रहा है, और या तो मैं sales जो दिखा रहा हूँ fictitious है, then I can see मेरा production and excise or whatever that records to tally it. Otherwise, GST return, ये return, वो return, that is all waste of time, absolutely crap. And believe me, you will not lead anywhere as a forensic auditor there. You have to talk about regulatory, you have to talk about propriety, not proprietor, propriety, मतलब genuineness of the transactions or the contracts that are examined. Now, as I said, fraud की कहीं definition नहीं है, but over our experience and over working with so many accounts on frauds, these are something that I've compiled, areas that we have looked into, where frauds जहाँ से हम लोग ने definition derive की है या उस act में हम लोगों को prosecute करवाया है. So Companies Act में we have section 447. Criminal Procedure Code and Indian Penal Code, one of the most dangerous codes ever, and this is the best thing, best tool available for a forensic auditor to use. This is section 25. Indian Contract Act 1872, that is section 17. SEBI में rule regulation 11C. SEBI is one hell of a institution, and believe me friends, कोई लोग SEBI में forensic audit पे ऐसे काम करते हैं. In fact, in one of the cases they've just used one line, that as usual, the promoters have not provided us the data for this, and hence we cannot comment on whether this is diversion or siphoning. Believe me friends, High Court mein, it just took the lawyer only half an hour to strike off the entire forensic audit report to say that, look boss, this guy is prejudiced. He has gone with the prejudiced set of mind to say that as usual,
they are not provided as data. मतलब drafting becomes so important here that you, although you know कि हाँ ये नहीं देने वाला, but you cannot write it in the report. The moment they heard this, the High Court said nothing doing. This is a prejudicial report. One comma gone here and there, struck off, and therefore immediate new forensic audit. So SEBI, and believe me, powers given in SEBI are so enormous. And really, if utilized in a very effective manner, can be done wonders by chartered accountants in the SEBI forensic audits. IT Act, of course, Section 43 and 44. PMLA, Section 3, one of the most strong, stringent acts available, wherein anywhere you see money has been siphoned off to offshore markets, you can freely invoke a PMLA, whether or not you're sure, because post that we don't know offshore mein kahan use hua kya nahi hua. So in one of the cases that we have covered, in fact, wherein Pakistan was involved, and later on we got to know from CBI and the SFIOs that thank you that you've given us such a big lead. This all was being used for terror funding, and I have started cover that case study as also. So I'll take you through that. Insurance Act 1938. This is the most common where forensic audits were done. Income Tax Act. These are some of the sections. And special audits, if you have heard of 142(2)(a), these are those audits. They are actually the most common kind of forensic audits that chartered accountants have been doing for a lot of ages, and that is very, very powerful forensic audit under Income Tax Act. RBI 35, the most critical, and given the financial frauds. This is the one that helps us, that empowers us. The notification dated 1st July 16, which I'll just cover here. So these are the kinds of frauds, and instructions issued by RBI under Power 35 of Banking Regulation Act, Master Direction on Fraud. So this is a circular 1st July 16, which should be there as a guiding principle for any kind of forensic or a fraud audit that you're doing. And there are Master Direction of Fraud. These directions are issued for a framework to banks, and along with this, you have another circular which talks about early warning signals. Some 43 points have been given in early warning signals, and these are something that you should definitely look at before starting forensic audit, or before beginning to do forensic audit, or before even going to forensic audits. Yeah. Now, very important. Next is sir, opportunities. So believe me, friends. आप लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो, आप इंटरनल ऑडिटर हो, रिस्क ऑडिटर हो, मैनेजमेंट हो, ये वो, whatever you are into, if you change a little bit, थोड़ा सा आप अपने आप को change करो, and you you develop a mindset of finding out fraudulent methods or areas where there could be frauds. Friends, दो चीज होगी. एक, welcome to the club for forensic audit, your ability to become a forensic auditor, and second, your fees will increase. Guarantee your fees will increase. मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ आपको, बताता हूँ आपको. So one of the webinars that I was taking, उस webinar में क्या हुआ कि someone asked me a question, sir, why is it that CAs don't get good fees compared to other professions, and ये वो. And I had a very important answer, very good answer. So आज, for example, doctors को आप देख रहे हो, I would say chartered accountants are the most noble professions. We are the most social personalities and most dedicated to our clients. Doctors, जो आज हम लोग जिनके लिए तालियां बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं. So whatever it was at the start, believe me, friends, they are the worst in today's ecosystem. The most corrupt profession, the most greedy profession. ठीक है, risk ले रहे हैं, बराबर है, but the way they are treating today in this lockdown, in this scenario, and the reports that you're hearing, in fact, just yesterday, Pune mein, they had held, so एक lady थी, single mother, she took her eldest son to get admitted into hospital for checking or whatever, और उन्होंने बोला कि एडमिट होने से पहले नहीं, हमको 2 लाख रुपए आपको पहले जमा करना पड़ेगा, तो ये हम एडमिट करेंगे. She said, sir, मैं इतना कर नहीं सकती हूँ, I'm from a very small belonging and I'm a single mother, I don't have so many means, savings नहीं है. फिर भी यहाँ वहाँ जाके वो लेके आई. Within 2-3 hours, she arranged those funds. वो लेके आई 2 लाख रुपीस. They said 2 लाख रुपीस तो लेके आ गया, बट इसका सबसे पहले जब तक कोविड टेस्ट नहीं होगा हम इसको एडमिट नहीं करेंगे. वो 2 लाख रुपए ले लिए और फिर ये बोलते हैं, तो आप मेरे को पहले नहीं बोल सकते थे, मैं 2 घंटे के अंदर 3 घंटे पहले इनका वो भी करा लेती और फिर लेके आती, फायदा क्या. And believe me, friends, the moment she was about to get it done, कोविड टेस्टिंग के लिए इधर उधर जा रही थी, that person died. That 2 lakh is also gone. मतलब वो तो पहुंची भी नहीं वहां पर 2 लाख रिफंड लेने के लिए. This was reported in the news.
इन मुंबई 15 लाख रुपीज वॉज डिमांडेड, 15 लाख रुपीज वो लेके गई और वो कैश था, कहाँ से लाती, लॉकडाउन है कुछ है, कैश लेके गई, हॉस्पिटल रिफ्यूज, नहीं सर हमारी पॉलिसी है, हमको तो चेक में चाहिए, हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं. दैट पर्सन डाइड एंड बिग जर्नलिस्ट था, उनकी सिस्टर के साथ ये हुआ. तो so these this is the process. I'm not trying to create an exception, but I'm just talking about things. Lawyers को क्यों आप ज़्यादा, so you'll find always lawyers earning more than a chartered accountants. Friends, lawyers are that breed of profession who are actually helping people. आप देखो, they would stand with the promoter, they would stand कि कहीं पर भी आप ट्रबल में हो, they would be the one to take them out. वो वैल्यू एड है, मतलब जहाँ है तो जहाँ है. एक प्रोमोटर के लिए आज मेरे लिए जिंदगी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर आज ही मेरे को अरेस्ट हो गया, एक स्टूपिड कोई किसी ने रिपोर्ट ऐसी डाल दी और उसको मैं डिफेंड नहीं कर पाया. मुझे आप बताओ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं. इनकम टैक्स इज अ सेपरेट थिंग, यस वी डू दैट and therefore we get reasonable fees also there, in a scrutiny or in a case. Why can't we do the same in real life scenario? ये स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में हम लोग ने सिर्फ अपने आप को कंप्लायंस में डाल रखा है, एंड बिलीव मी दैट इज एब्सोल्युटली ऑफ नो वैल्यू. क्योंकि आई विल टेल यू फ्रेंड्स, मेरे जितना एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, इन इंडिया देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ कंपनीज. वन, जहां पर प्रोमोटर्स को मालूम है कि मेरे कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, पैसा लीकेज हो रहा है, सैफनिंग हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, व्हाटएवर. एंड सेकंड, the promoters don't realize or they don't know fraud is happening in the country. इसके अलावा there is absolutely no other company in India. है, I'm more than happy. I'll be happy to render my services there and prove you wrong. Chance ही नहीं है, and therefore, and you all in one or the other capacity are working with those companies. Why are you not highlighting? Why are you not indicating? Why are you not bringing on this report? And चलो रिपोर्ट मत करो, पर एटलीस्ट इंश्योर तो करो कि आपकी फीस अच्छी हो जाए. इंश्योर तो करो कि यू बिकम वेरी वैल्यूएबल टू दैट प्रोमोटर. अब इंश्योर तो करो यू बिकम वेरी वैल्यूएबल टू द एंटायर बोर्ड, कि आपने ये फाइंड आउट करके दिया और ये सब आपने अनअर्थ किया है. कोई ना कोई तो रिकग्नाइज करेगा, कोई ना कोई अप्रिशिएट करेगा. क्या चेंज करेगा? चेंज हो जाओ, इट्स गुड, यू आर गोइंग अवे, बट एटलीस्ट गो विद अ वेरी गुड फीस. एक ही चीज को कंटिन्यूसली लेके रखने से कोई फायदा नहीं है. एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स. लॉयर्स का आप देखो, दे कीप ऑन चेंजिंग, कोई रिटेनरशिप पे ज्यादा काम नहीं करते हैं, बट व्हाट दे डू इज मैक्सिमम इज दे प्रोटेक्ट, दे बिकम वैल्यूएबल, दे हैव अ फैंटास्टिक वैल्यू ऐड. कंप्लायंस में वैल्यू ऐड करना आज कोई भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है. एंड वी ऑल नो, अगर कोई भी मैं रिपोर्ट ओपन करूँ एमसीए में, मैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिफॉल्ट आने वाला है. तो हाउ एवर फुल प्रूफ वी आर, वी गोना हैव दिस. So this is one slide that I have identified and I have put up for you. Whenever you are in a corporate, find out some areas like this. If there is something like this happening, identify, put it on record, bring it on, at least draft pe lao, kuch to lao, and let a promoter know that you have unearthed it or you have found it. If you have analyzed it, anyone can do it. And how does that person wants to deal with it? Make sure you are in a driving position, make sure in a value add position, make sure you are in a commanding position there. Personal purchases, you see, जो भी हम forensic audit में कर रहे हैं ना, any these days all of us can do that given an exposure. आज मैं इनफैक्ट जो जिस कंपनीज के हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उनके ऑडिटर्स हम पूछते हैं, so somewhere or the other they were very much in position to get that. Only that time, only that training, only that orientation was missing. मतलब अगर वो कर लेते तो the amount of fees that we can make is amazing, and the amount of value that we can create for that promoter or a client would be great, more than a formality. So these are some of that areas. I'm not going to go in one of them, but all of you would realize, all of you would know this. If at all is required, maybe I could cover them later on. But chunki our time is very less, and I have a very detailed presentation actually. Because so far I've heard on forensic audits, people have not been creating any value for us. They've been just giving us upar se, and maybe with a message that कहीं भी आपको forensic audit मिले, आप मेरे पास आना, हम लोग करेंगे. So I want to ensure that all of us somewhere are creating these skill sets amongst us. और वो करने के लिए सबसे पहले आप करो अपने ऑडिट क्लाइंट्स पे, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है फोरेंसिक में लग जाओ. इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट बन गया ना, यू विल क्रैक इट. So these are the kind of frauds that I've identified, and we'll deal with this in details next. High risk, fraud prone, risk prone areas. High. Again, this is only as a guidance for all of you कि यहाँ पर तो आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है. इनकम टैक्स में होता ही है. सी असेसिंग ऑफिसर्स आपको मांगते ही हैं ये सब चीजें कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको मालूम है इधर ही गड़बड़ है, वहीं से उनको कैपिटल मिलेगा.
Yeah. So I hope you record भले ही ठीक है, but let's understand this properly. Entertainment expenses, high risk third parties, financial patterns, payroll, ghost employees, charitable, petty cash, high risk. So all of this. आप forget that. आप तो ये देखो कि एक जगह से वो कितनी कंपनियां चला रहा है, कितने स्टैम्प्स है उसके पास, कितने क्या स्टैंपिंग कर रहा है, कितने क्या एक्नॉलेजमेंट दे रहा है वो. If you can find out that, that itself is a big thing. Related parties is a concept which all of us should forget immediately. हाँ, reporting कर रहे तब तक ठीक है, but while we are auditing, we should start looking at a concept highlighted under section 29A of IBC, connected parties. आज जैसे for example, can I see? I can see Saurabh Kela over here, for example. तो आज जैसे मेरे को कुछ करना है, I have to do something wrong, and Saurabh Kela के साथ I reached out to Saurabh यार कुछ कर लेते हैं. I don't know if you're senior or not, but I'm just taking the liberty of calling him by his name. तो Saurabh, let's do this यार, ये पैसा इतना तेरे इधर बिलिंग करा देता हूँ, ये तेरे पास दे देता हूँ. So keep it with you, yeah, और देखते हैं. So see, there has to be something common between me and Saurabh. Me and Saurabh are not related at all. We don't have any common thing. But कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर वो डायरेक्टर है, वहाँ पर मैं होगा, मैं कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट तो मिलाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा. That is what is connected person definition. मैं अपना पैसा या मैं कहीं एज अ प्रमोटर कहीं डाइवर्ट कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोना कीप इट विद एनीवेयर एनीथिंग. या बैंक में तो रख ही नहीं सकता, और मैं किसी ऐसे के पास नहीं रख सकता जिस पर आई कैन नॉट ट्रस्ट और आई डोंट हैव कंट्रोल विद, राइट. तो कहाँ रखूंगा? मैं उनके पास ही रखूंगा जो कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्टेड है. एंड मैं इतना श्योर हूँ कि मैंने सीएस को बैठा रखा है फाइंड आउट करने के लिए कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, उनके साथ नहीं करना है. सो फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ पार्टीज, फाइंड आउट, probe them, audit them. That is where you're going to get an observation. Coming to bank frauds, the context of our topic today, key reasons for rise in bank frauds and NPAs. One is diversion and siphoning, willful non-payment of bank funds. Well, ab kuch bhi ho jaye. Coxin King, for example, travel company hai, service company hai. How can it default? Why and what have they done that they have defaulted so much? Yeah. Non-effective due diligence of borrowers. Our banks जो हम देख रहे हैं, influence to banking employees for sanctioning of loans, very critical element, and non-effective banking management. Now, what are the steps in forensic audits usually? एक forensic audit अगर आपको मैं एक बताऊं, just short time लूं आपसे, every forensic audit assignment is a story, is a typical Bollywood mystery story. Hollywood rather, Bollywood तो हम लोग क्यों compare करें cheap चीजों से? And I'm saying cheap because अभी recently I've seen a video, एक कोई person interested in army dress or something is really accusing Bollywood of creating some below the line material on web series and all, and trying to portray our women in a very sorry state, and absolutely starved for sex or something, whatever, whatnot. So I think really the mindset of Bollywood today has gone absolutely below that level of dignity, and there are only handful of people who are doing so. Then let's compare it with Hollywood. At least they are not copying, so they must have said this, and now we are copying them in cheap possible manner, in like typical those B grade C grade types. But these Hollywood, I don't know if you've seen Money Heist. It's a Spanish series on Netflix. It is available, so anyone who's interested into this, please do watch it. You'll find it very engrossing and very entertaining also. Interesting also. So think of it. सबसे पहले जैसे ही ओपन होता है, मूवी का सीन चालू होता है, थिंक ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री मूवी. पुलिस आती है, सायरन होती है, देयर इज लॉट ऑफ chaos, एब्सोल्युटली लॉट ऑफ chaos. हमारे इस केस में भी ना, देयर इज एब्सोल्युट लॉट ऑफ chaos. क्यों? क्योंकि एक अकाउंट जिसको बैंकर्स प्रोमोटर्स मिलके बहुत टाइम से बचा रहे हैं एनपी होने से, वो फाइनली एनपी हो जाता है. मार्क माय वर्ड्स, फाइनली एनपी हो जाता है. तो बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ हो जाए, ये वो एलसी घुमा रहे हैं, एंट्री घुमा रहे हैं, परचेसेस दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, कैसे भी करके बचा रहे हैं हम लोग उस प्रमोटर को, पता नहीं क्यों, बट मतलब व्हाटएवर द रीजंस इज कि वो एनपी ना हो जाए, और वो एनपी हो गया. सो दैट इज अ लॉट ऑफ chaos. एवरीवन इज रनिंग हियर एंड देयर, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना बड़ा अकाउंट एनपी हो गया, अब होगा इसके ऊपर एक्शन, उसके ऊपर से एवरीवन इज स्पेक्युलेटिंग, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग लाइक अ मूवी. यस, एकदम हॉलीवुड टाइप्स कि chaos है, पुलिस सायरन आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, ये आ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सायरन, chaos. देन कम्स स्टेकहोल्डर्स बैठते हैं, वो बताते हैं कि क्या इंटेंसिटी है इस क्राइम की. So we'll find in a movie also, we'll find all of these people sitting
माय गॉड ये तो ये हो गया, इसका इतना बड़ा डेप्थ हो गया, इसका ये हो गया, इसने वो किया, ये क्या, सारी थ्योरीज आती है. सो दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू द क्राइम. दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर केस आल्सो. स्टेक होल्डर्स सब बैठते हैं, सारे बैंकर्स, दूसरे कंसल्टेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब बैठते हैं. प्रमोटर को अब बोल देते हैं बाहर, अब आप बाहर बैठो, अब हमको सोचना है हम क्या करना है. अब वो बैठते हैं, दे एनालाइज एवरीथिंग और सब बात करेंगे, बताएंगे और ये बनेगा. एंड देन फाइनली दे अंडरस्टैंड कि अब वो हेल्पलेस है, या फिर दे डिवाइज अ स्ट्रैटेजी कि इसको कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे, और फिर कम्युनिकेशन चालू करते हैं. दैट इज हाउ दे डू इट थ्रू अस. इन आवर वर्ल्ड ऑल्सो दे विल देन कॉल इन एक्सपर्ट. उसमें वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेटर, डिटेक्टिव या हीरो आता है. हमारे इसमें भी हम आते हैं, फोरेंसिक ऑडिटर्स आते हैं. दे वो सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, दे बिलीव यार ये तो गॉन केस है, ऐसा ऐसा है, बट हाँ लेट्स गो टू द ड्राइंग बोर्ड. देन वी गो टू द ड्राइंग बोर्ड. फिर वो पूरी मूवी बनती है, क्लाइमैक्स आता है, कुछ ना कुछ ओपनिंग होता है, और देन उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है या जो भी है. फाइनली मूवीज में तो वो खुद ही कन्फ्रंट कर लेता है. हमारे केस में कन्फ्रंट कभी नहीं होता, बिकॉज इन अस वी ऑलवेज बिलीव कि कुछ ना कुछ हो जाए, मैनेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो बच के निकल जाएंगे. आज हम देख रहे हैं रणबीर कपूर कंटिन्यूसली घूम रहा है, ईडी में घूमता जा रहा है, यू नो ऑल ऑफ दिस बिग पीपल, डीएचएफएल, वाधवान वगैरह सब सब घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. सो चलता रहेगा. सो दैट्स अ माइंडसेट इज देयर. Believe me friends, IBC जब से आया ना, the amount of discipline that has been come in India in the financial sector has been massive. Over a period जो हम लोग ने बैंड बजा दी थी बैंकिंग सिस्टम की, और the entire legal system की for a banking finance or a banking terminology. सरिता जी, मैं request you to please put on mute, go on mute please. Same noise आ रहा है. सरिता पुरोहित जी. So you know all of that is happening here. IBC ने वो डिसिप्लिन लाया, वो फियर लाया कि बॉस अगर आप नहीं माने ना, ये कंपनी आपके हाथ से जाएगी, और लीगली जाएगी, तरीके से जाएगी. SR बिगेस्ट एग्जांपल, 52,000 करोड़ लेके खड़ा है आदमी, बोल रहा है कि ले लो, 2 साल निकाल दिए मैंने जैसे तैसे करके, फिर लाके दे रहा हूं मैं, बट नो मीन्स नो, ये जाएगी कंपनी आपके हाथ से और गई. अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन के कारण अब वो 1 साल का पीरियड उनको दे दिया गया है, वेयर इन IBC हैज बिकम मूट. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ऑर्डिनेंस जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो इतना वो भी स्ट्रांग नहीं है. बट हाँ वील हैव लॉट ऑफ दिस. बट वो 1 लाख से 1 करोड़ करने पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को तो वाइप ऑफ कर दिया इन्होंने. It's gonna big hit to all of us, and especially in the discipline that they would have created for in the minds of these corrupt promoters. So these are the steps, as I said: initialization, then we develop a plan, we obtain relevant observations, we then do the analysis, then we do a reporting, which is very critical, the forensic audit reporting. In fact, we do a session totally on only reporting, evidence testing and investigation, legal counsel proceedings. Now, approach. Before I start with this approach, you know, I think it's already 6 o'clock. I would want to know if all of you are fine with whatever we are doing. Maybe you can type in a checkbox, and I may just take a small little 30-second break on drinking water. Might as well please respond if you all are okay. And I'm sure you're there, you're listening to us. So, and if you're feeling it good and if you're finding it interesting and nice, so I'll go ahead, or else I'll try and change something in this. Sir, go ahead. Lot of comments are coming up, sir. So we have to do interaction, no? नहीं तो सिर्फ सुनना मतलब it's very difficult यार. सब सुन रहे हैं अच्छे से. अच्छा, okay. Yes, sir. Just because when we speak, no, there's so much of energy that we generate. तो hydrate करना जरूरी होता है. So therefore I had to take this break. But you know, good to hear all of you are enjoying this. So you know, I'm gonna make it more interesting for you now while we cover approaches, and in a classic Hollywood movie style, we're gonna come to a very good climax also very soon. So just a second, I'm getting back to my presentation. Welcome to the ingredients for fraud or mischief. Who is a fraudster? कौन है ये? अगर आप इन लोग में से किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आसपास, believe me friends, you are in for a great good amount of fees in your assignments. आप वैसे इंडिविजुअल को जानते हो जिसके पास आइडिया है, एम्बिशन है, नथिंग टू लूज, मतलब he always talks with a flair. भले ही ज़्यादा नहीं है उसके पास, but he always says कि अरे मैं तो देखो ये कर दूंगा, अरे
सो सपोज मयूर भाई मैं तो आप देखो, आप देखते जाओ, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, अभी आप ये देखो, मैं ये करवा दूंगा, वो करा दूंगा, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ. सो दैट कनेक्ट्स, and he has that team of some advisors who are absolutely greedy, and they want to achieve something through this person who is ready to take risk. Vision, उसके पास बहुत बड़ा विजन होता है. So these are good things also, but you know कहीं ना कहीं वो in with the due to lack of direction, due to lack of good advisory, he gets lost. So vision, for example, वो vision होना चाहिए. Gets money easily. So consultants like us, you know, we arrange these funds for them. You know, CMA data fudging करना, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की feasibility reports बनाना, और in fact one of the cases that I have done, I'll tell you friends, you know, it was a power project company, it was a power plant that they had to prepare. इनकी इनकी जो इनके कंसल्टेंट्स थे, उनको जब बैंकर को दिखाना था फिजिबिलिटी और स्टडी, ये वो सब, इन्होंने क्या किया, सो दे टुक ऑफ फ्रॉम कैलकाटा. सबको तो पहले कैलकाटा बुलाया, आई डोंट नो व्हाई, पर वो कैलकाटा बुलाया. कैलकाटा बुला के इन्होंने बहुत अच्छी, एंड दिस इज अ मीटिंग दैट यू नो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय लाइव एग्जांपल. उन्होंने सबको बुलाया, वहाँ पे बताया कि देखो ये प्लान है, सबको बहुत शानदार ऐसे प्रिंटेड अच्छे अच्छे वो दिए, कैटलॉग्स दिए, ब्रोशर्स दिए कि हम ये प्लान ऐसा सेटअप करना है, ये वो है. किसी बैंकर ने, और सबको बढ़िया से 5 स्टार में दारू चालू है, ये सब चालू है, यू नो ऑल ऑफ दैट, खाना पीना बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है. एंड सडनली किसी बैंकर ने बोला सर यहाँ पर एक बार साइट विजिट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा. बोला साइट विजिट कभी कर लेते हैं, आपने आज टाइम निकाला, आज ही करा लेते हैं. तो बोला क्या है, कैसे, बिकॉज ये साउथ में कहीं पावर प्लांट बनाना था, उधर जगह ले रखी थी. तो बोला अभी कर लेते हैं, उसमें क्या है. चलो ठीक है, सबको गाड़ी में बैठाया, एयरपोर्ट ले गए. वहाँ पर प्राइवेट एक 21 सीटर जेट रेडी था, सबको बैठाया उसमें. अंदर एयर होस्टेसेस आई एकदम टकाटक, सबको लेके आई, सबको आईपैड वाईपैड दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वेंट ऑन. फ्लाइट उड़ी, गया वो साउथ तक पहुंचे. दे वेंट देयर, उतरे और सर्कलिंग कराया. तो उनको आईपैड में बताया कि सर ये देखो, ये जमीन दिख रही है, ये फेंसिंग हो रखी है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, आप ये बटन दबाओगे तो आपको दिखेगा क्या प्रोजेक्ट आना है. तो वहाँ पर ये सारा बन गया, ये हो गया, ऑल ऑफ दैट थिंग किया. उनको बस फ्लाइट से बाहर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं करके वापस कैलकाटा गए, वहाँ पर ड्रॉप किया. बोला कि सर ये डन है, लोन सैंक्शन, मतलब अंदर ही प्लेन में सबको साइन पेपर दे दिया, सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन. ऐसे तो इन्होंने लोन सैंक्शन कराया. 7 years, not a single development on that power project plant had happened. Not a single development. वो वहां पर सिर्फ घास ही घास हुई. एक छोटा सा शेड बनाया गया था जिसमें, जहां पर उसने फेंसिंग वगैरह कर रखी थी, और एक रफ घर बना रखा था. जस्ट इमेजिन क्या लेवल के प्रोमोटर्स हैं, क्या लेवल के कंसल्टेंट्स हैं, क्या लेवल के काम होते हैं. Yes, we did that forensic audit, and I was shocked when he also took us to give a जब हमको site visit, because site visit is something very important for a forensic audit. So he took it like this to provide कि सर यहाँ पर ये बनाना था, ये ऐसा ऐसा है. It was later on when we decided to do a site visit on our own through ground road से जाके जब हम गए, we realized कि बाजू में just थोड़ा सा दूर उनका एक और प्लांट है, related party, connected party का. वहां पर सारा काम हो रहा है, उसका सारा रॉ मटेरियल ये वो सब इसमें पड़ा है. इसी के साथ उनके पास एक और जमीन पड़ी है, और वहां पर सारा वेस्ट प्रोडक्ट डंप होता है. तो वी नेवर रियलाइज कि गया किधर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट गया किधर, पैसा गया किधर. एंड देन वी थॉट कि अरे ये पैसा तो इसमें लगा है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लिखा रखा है, वहां से उसने वो प्रोजेक्ट सेट किया, उधर इतना पैसा अर्न नहीं कर पाया तो ये वाला सेट नहीं हुआ. बिकॉज दिस वाज टू बी एन इंटीग्रेशन फॉर दिस प्लांट, कि उसको चलाने के लिए दे वांटेड पावर टू कम फ्रॉम हियर, गॉन. So itne bhi zordar and these people are there, you know. So and they have relatives, people and infrastructure. See, relatives are the most key person or ingredients who will incite you or encourage you for fraud. Yeah. हाँ हमें आप टेंशन मत लो, हमें हमारा पूरा आपके ऊपर ही है, आप ही सब कुछ हो करते हो, हमें आपके साथ खड़े, जो आप बोलो वहाँ साइन कर देंगे, जो करो वो कर देंगे. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो दुनिया मुट्ठी में. सो आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनीवेयर एल्स ये लाइन से. You know, it's absolutely just that attitude I'm talking about. In fact, we should congratulate you know, Reliance, world's biggest rights issue they have brought out. So you know, an Indian company doing a world's biggest rights issue for Jio. If anything, lockdown जो अभी तक बोलते आ रहे थे कि चैलेंजिंग टाइम है, सुनो, दिस लॉकडाउन वाज इंटरेस्टिंग टाइम. चैलेंजिंग टाइम तो अब आने वाला है. अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एनरिचिंग टाइम रहा है.
these episodes have told us that चैलेंजिंग टाइम तो अब आने वाला है. दिल्ली में कल एक दिन में इतने सारे केसेस आए हैं जो उनके 86 डेज में नहीं आए थे. So अब चैलेंजिंग टाइम अब शुरू होने वाला है. So and then the last and very important is struggling ecosystem, greedy professionals. Unfortunately, but really with whatever experience that we've got, and we've gone ahead doing so many forensics, we have found most of them, there were some chartered accountants involved who've done anything for that, and they didn't, perhaps they did because they never realized कि इसका impact ये होगा. They didn't have that vision कि इनकी ये कहाँ जा सकती है, इनकी रिपोर्ट, इनके signatures कहाँ कैसे use हो सकते हैं. So but unfortunately they are now facing a lot of music. But young CAs who are there in this branch, maybe this is I'm going out to you. Please understand very critically whatever that we're doing. Don't repeat these kind of mistakes that some of these people have already done or seniors have already done. And you should really listen to some of these seniors, and you should really have that senior in your life who's guiding you or mentoring you, and you should share everything with that person. Coming to this forensic audit, these are the steps, and I'm saying this is not only for forensic audit. I made this slide for each one of you to do it in your own engagement, also in your own exercise also. Preliminary analysis. I'll tell you what is preliminary analysis. These are steps. Maybe you can take a quick screenshot of this, or maybe note it down in with your pen and paper. Always see, even I'm sitting with a pen and paper because whom should I have to thank, whom do I have to do, whatnot. Cannot keep it in mind. We should not keep it in mind because it doesn't stay more. Always keep on noting down. Always keep a pen handy with you, whatever you're doing. Because एक चीज हमेशा ध्यान रखना, breakthrough. आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक होता है कि अगर एक पानी भरे हुए टब में अगर कुछ डालोगे उतना ही अमाउंट पानी बाहर निकलता है. तो आर्किमिडीज वाज नेकेड एंड ही वाज बाथिंग एंड ही स्ट्रक विद दिस प्रिंसिपल व्हिच ही वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट कि व्हाई इज इट हैपनिंग. तो दैट ब्रेक थ्रू कैन हैपन एनी मोमेंट, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ब्रेक थ्रू. क्या पता ये स्लाइड्स में, ये प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा आप. So see, my entire idea is to, as I said, now I've started working on psychology and psychological level of human minds. So my entire presentation is structured in a way to take you into a state where you start imagining yourself with your client, and कहीं ना कहीं आप identify करो कि मेरे को ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, so I would have done this. And somewhere I know you, all of you must be doing it already. And if you're not, do it. But keep a pen with you. Keep writing things down, whatever you believe. और एक breakthrough अगर आपको मिल गया, my seminar today and the efforts of the entire managing committee and whoever arranges logistics would be amazing, would be well rewarded if any one of us get a breakthrough out of this. So preliminary analysis, bank statement analysis, financial statement, market intelligence, background. So these are the 4 steps. और मैंने आपको ये जो circles है बाजू में जो मैंने बताया, that shows the amount of efforts that you'll have to put. So preliminary analysis के लिए it's only 1/4 of the effort, बहुत easily मिल जाएगा. Bank statement के लिए little more, financial के लिए much more, and market intelligence के लिए beyond your imagination. This is one which makes or breaks a forensic auditor. If not this, nothing can happen. And what are the typical results and outcome of the review? So financial statement manipulation, window dressing, एक ये होता है. Diversion of funds foreign into real estate or whatever. So this is one. Siphoning. So diversion और siphoning का difference ये. Diversion मतलब I've parked it somewhere and I can recover it, or it is there somewhere. I know I've created an asset. Siphoning means मैंने गायब ही कर दिया वो पैसा. So maybe उड़ा दिया है हवा में, जला दिया है, terror funding में चला गया, porn movies में चला गया. So all of that goes off. In fact, very important that I've addressed, I'm telling you, and I've taken a big webinar also on this, is most of the funds that get siphoned off are usually used for 2 destructive activities, that is siphoning and the other is porn. And somewhere when we watch porn or whatever XYZ, we are somewhere encouraging all of these things. So one thing that we should always keep in mind is these are some activities which we should absolutely avoid, not only for our on ethical purposes, but also on this quality purposes, in terms of that money has been illegitimately sourced, and they are misusing us as an individual to create value for themselves, and genuine losses due to internal external. Now this is one point that as a chartered accountant, you have to be very very careful. एक आपने स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें आपने सुना होगा एक डायलॉग, विद ग्रेटर पावर कम्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये वही है फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स में. एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर
you will have to address this issue. You have a power to make or break an industry. और एक industry, I'll tell you, कोई भी एक छोटी सी industry ले लो, चाहे अमरावती में, चाहे आसपास में, जहाँ पर भी हो, वो एक promoter, वो एक plant बनाता है, वो plant में at least 1000 employees होते हैं, तो 1000 employee की each and every household is dependent on that promoter on that plant. आपके एक jerk action से या एक irresponsible action से वो plant बंद हो सकता है. प्रैक्टिकल व्यू लेना बहुत जरूरी है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके 1000 हाउसहोल्ड्स, ईच हाउसहोल्ड एवरेज समझ लो 3 या 4 लोग रहते हैं, हर लेबर हर एम्प्लॉय के जो उस प्लान पे डिपेंडेंट होते हैं. इतने सारे लोग का रोजी रोटी एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर एबिलिटी टू एनालाइज अ रिपोर्ट एंड टू रिपोर्ट इट इफेक्टिवली एंड टू प्रेजेंट इट इफेक्टिवली. तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव गॉट एन इमेंस पावर एंड वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क व्हाइल डूइंग फोरेंसिक ऑडिट्स. We cannot just afford to be very reckless. And इसमें आप article trainees को involve नहीं कर सकते हो छोटे छोटे काम के लिए. You have to get or you have to train those article trainees so well that these people do this task very effectively. और आपकी जो monitoring है, एक एक word, एक एक line की monitoring important है. So this is how it is. So ये this is what I've addressed and this is also everything. अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया. हम लोग आज जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कोई मजाक नहीं है. ये जो everything that I have used, every little word, every little diagram, every little image will have a deep meaning. Understand that, and therefore try and gauge it in advance. And that is how even I would want to develop. I'll have a case study also. I'll try and see if I have evoked your investigative mentality by all of this. So this is a prep session for all of you. So initial steps, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्टोरी है पूरी की पूरी. So I understand every forensic assignment, every forensic audit is a storyline for you. It's a story. अब उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके कैरेक्टर्स कौन कौन है स्टोरी में. So preliminary analysis is company profiling or whatever that entity profiling. So details, line of business, related company, associate, subsidiary, as I said, connected parties, सारे के सारे आपको मिल जाने चाहिए. मतलब आपके एक पेज पे या एक ड्राइंग बोर्ड पे आपके पास ये सारे के सारे कैरेक्टर सामने हो जाने चाहिए. उनके बैंक अकाउंट्स, उनके क्या क्या काम है, क्या लाइन ऑफ बिजनेस है, कौन किससे क्या कर रहा है, फैमिली ट्री फॉर एग्जांपल, सब कुछ. शेयर होल्डिंग पैटर्न, पास्ट एंड करंट डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट एंड करंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. देन प्रोमोटर ग्रुप एंड डायरेक्टर प्रोफाइलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप करना. प्रिपरेशन ऑफ फैमिली ट्री ऑफ प्रोमोटर, जितना भी आप बना सकते हो. So one of the cases that we were doing in Amravati, biggest breakthrough we had was when we prepared their family tree, and now all these brothers are fighting amongst themselves. We get a lot of leverage amongst these people. A list of the directorships held by the promoters group, बहुत important होता है. कहाँ कौन सी कंपनी में, इनफैक्ट कहाँ पार्टनर है ये लोग, वो निकालना होता है. Basic background information of the company in which the promoters hold directorship. So these are the details. So ये सारी चीजें, maybe you can take a quick snapshot of this also, because this is the main basic shell of a forensic audit report. This is what you need to have, must and write. इसमें अगर कहीं पर आपने मिस किया, कोई भी कैरेक्टर मिस किया, तो आपका कंक्लूजन विल गो फॉर अ टॉस. क्योंकि आप देख रहे हो, पर अगर आपको मालूम नहीं कि वो इस स्टोरी का पार्ट है, तो आप कभी उस पर इन्फ्लुएंस नहीं बना पाओगे, कभी प्रूव नहीं कर पाओगे, कभी कंक्लूड नहीं कर पाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in this activity. This is an example that I have set up. Preliminary analysis revealed the family tree of the borrower. तो अभी जो borrower था, that is the borrower is was this person, promoter of company 1. अब उसमें एक director ये था, और उसमें suddenly एक ये बंदी आती है और एक ये बंदा आता है. हाँ, और अब ये आप देखोगे ये कहाँ पर और भी है. डॉटर इन लॉ 1 is in director in these 2. कि nephew है, ये भी इसमें है, ये दोनों उसमें नहीं है. तो रिलेटेड पार्टीज में ना कहीं आपको ये और ये मिलेंगे नहीं. या कैसे करना, कनेक्ट करना, क्या नहीं करना. सो देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पेपर बनाना बहुत जरूरी है. सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच ऑफ टाइम, इज जस्ट अ सिंपल केस स्टडी. शायद सीए फाइनल में भी आई हो, तो आई डोंट नो, बट दिस इज वन ऑफ आवर लाइव केस जिसमें हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था इतना सब. तो एंड दिस इंडिविजुअल डॉटर इन लॉ 1 was the biggest fraudster here. Big mind. Yeah. So further I indicated that all were in unrelated business and all of this. So this is one just simple. Next, very critical again, analysis of bank statement. यहाँ पर here it is required of your financial skills, your analytical skills,
your Excel, your technology, everything is here required. So maybe Jawar sir जो आज अभी cover करेंगे tools, that will be basically for this. ILFS का केस कभी अनर्थ नहीं होता, कभी मालूम नहीं पड़ता अगर उनके ईमेल्स ओपन अप नहीं होते. वो ईमेल में लिखा गया था कि हाँ ऑडिटर को मैनेज करना पड़ेगा, अच्छा मैंने बात कर लो प्लीज आप कर लो, वो मान नहीं रहे हैं, तो ऊपर डायरेक्टर ने लिखा कि ओके आप करवा देता हूँ, मैं बात कर ली है, मान जाएंगे, आप इन्फॉर्मेशन दे दो. उससे आई कुड मेक एन इन्फ्रेंस कि ये सब फ्रॉडुलेंट है, ये सब मेड अप है. अदरवाइज नेवर, नॉट एट ऑल पॉसिबल इन द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन कि भगवान शायद उतर जाए तो भी नहीं बता सकता कि ILFS में फ्रॉड हुआ था, you know, or these auditors have goofed up or have made a wrong financial statement. वो भी Deloitte और वो भी GT और इतने बड़े-बड़े auditors. So GT is doing the forensic audit, but you know these people have done that level of jugglery in an audit. कभी नहीं मालूम पड़ सकता था. So that is where these analysis, these tools will help you. So bank document review, loan sanction documents, LC, BG, any special audit report, stock audit. So I'm saying don't rely, but you should always keep them in. क्योंकि स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट से आपको मालूम पड़ेगा कि इसने तो इतना स्टॉक ऑडिट बताया था, बट हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से तो इतना है नहीं स्टॉक. और अब आपको डर तो है नहीं, आपको फीस तो लेनी नहीं है बैंकर से और अगले बार काम लेने के लिए जाना नहीं है, तो आप तो सीधा गोली मारो कि अरे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा सिस्टम लैप्स है, रिपोर्ट में डालो आप. दिस कैन बी अ वेरी बिग पॉइंट. In fact, I'll tell you, friends, already people have been getting invitation from various CBI offices just to come and confirm whether the stock audit was signed by you. Many cases, many chartered accountants receive that. So, how do I know is because we work very closely with CBI also. So, कहीं ना कहीं से वो information आती रहती है. And plus, with the help of all of you, we are now at a position that most of them people relate to us. And I've been guiding so many young chartered accountants or maybe their firms in one way or the other. That's these are critical information, and it is the worst part that हमारे पर कभी ऐसी responsibility कुछ ऐसा आता है, we are ashamed, we don't go and share, we don't talk. और जब वो नहीं कर पाते ना, हम लोग घुटते हैं और हम लोग को समझ नहीं आता what is the way out. See, we all can help each other, but only thing is we have to be transparent, we have to share, and also the other party has to understand, not make it a point of an embarrassment. See, all of us have not done these because we don't know that situation, what we had done that time. So definitely there's a way out. If promoters like these can get a bail very easily after doing मतलब पूरा murder कर लिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी बाहर घूम सकते हैं, तो what have we done यार? We have to in fact spend our life only behind these deadlines for these idiots. So why can't we, so we need to come out of that shell of that tag of embarrassment or something and accept कि आज ये सब हो रहा है. It's okay. But we'll have to fight it out and we'll defend ourselves. So you need to develop that sense of confidence also. So data analytics on bank statements, this is something very important. Perform trend scenario analysis such as month-end debits and credits. Circular movements, see, very easy. Circular movements is very easy to find out. In fact, in one of the cooperative bank audits, forensic audits, and this firm came to me for help to find out these kind of things. Very simple, most of these accounts would be there in the same bank but with a different branch. So it is very easy कि आपने अगर end beneficiary निकाला, हर transaction के आप end beneficiary निकालो, फिर उसका account number देखो या उसके PAN number या KYC देखो, उसका account आपको इस बैंक में मिलेगा ही मिलेगा इसमें, क्योंकि वो सब related ही होगा, और फिर वो KYC भी गलत होगी. जैसे for example in one of the cases what happened and how did we unearth it was take an example. RKS एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसने RKSN कंपनी, तो उसने इट्स हार्डवेयर कंपनी, मतलब जो जिसने मेरे को प्रोफोर्मा एनालिसिस दिए थे कि मैं आपका ये स्ट्रक्चर फर्नेस बना के दूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये फर्नेस पूरा बना दिया मैंने, आपका इसका मैंने प्रोफोर्मा एनालिसिस दिया, मैंने ये दे दिया उसको वर्किंग कैपिटल डिसबर्समेंट के लिए कि डायरेक्टली कर दो. बट वो RKS कंपनी के मैंने एक बैंक अकाउंट खोला मुंबई में एक दूसरे ब्रांच में, उसके मैंने KYC दिए मेरे खुद के, और RKS कंपनी प्रोप्राइटरशिप बना के मैंने रख दिया, और वो पैसा मैंने बैंक डिटेल्स उसके दे दिए, उसमें पैसा चला. इस बंदे को तो मालूम ही नहीं कि इसके इनवॉइस से ये सब हुआ, और कहीं ना कहीं कोई CA ने भी उसको हेल्प किया होगा साइन करने के लिए, कुछ बेट करने के लिए, उसको भी नहीं मालूम कि ये प्रमोटर ने ये काम करके गया है. या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत इजीली मालूम पड़ सकता है, बट दिस बैंक स्टेटमेंट विल ओपन अप द एंटायर आइडिया फॉर यू. इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इसमें बहुत लगेगा आपको. And each one of you who is working on this assignment has to be skilled enough to get things out from a party.
ये आप सीधा डिमांड करोगे मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. You'll have to create, you'll have to start talking, you'll have to do all the strategies कि वो आपको हेल्प करना शुरू करें. अदरवाइज इट्स नॉट गोना हेल्प. और उसमें आप सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो काम आती है कि आपका सीनियर आके ऐसा झाड़ के जाए उसको, और या तो ओवर पावर करके जाए, और आप उसको प्यार से बोलते, अरे पता नहीं यार वो हेडे हैं, इतने बड़े हैं, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप यार छोड़ो ध्यान दो, आप तो बताओ. मतलब एक एम्प्लॉय के साथ टाई अप हो, ट्यून अप हो, बोला मेरे को भी नहीं सैलरी आ रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, आपके साथ भी एक काम करो, आप तो दो, जो दे सकते हो दो, क्लोज करेंगे वो अपन, तो मैं तो छोड़ दूंगा, आप बता दो तो बता के निकाल दूंगा, डोंट वरी मैं आपके को बचा दूंगा. तो यू नो ऑल ऑफ दीज स्वीट टॉक्स और ये सब करना बहुत जरूरी होता है. So all of this is there, and then kind of background check on identified beneficiaries, entities, related parties from about test. सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं वो अगर आपको इस स्टोरी में दिख गए तो then you are going in the right direction. So you know you can then shortlist on which character to focus on. This is one. This consortium banks 95.97 crores मैंने डिसबर्स कराया मेरी कंपनी में. इमीडिएटली उसी दिन 8 मई को ही 95.5 करोड़ चला गया. ये गलती से 2015 रह गया, एक्चुअली लाइव केस स्टडी थी तो मैंने लगता है जिसमें बनाए 15 रख दिया. सो इनकॉर्पोरेटेड March 15 with paid up capital of 1 lakh. ये रियल लाइफ है, एक्चुअली केस स्टडी है. Incorporated just 2 months before the bank loan transaction date, and directors of newly formed entity are director A and B, who are the employees of the target company, and registered address is same as of target company. तो कहाँ पर ये कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी में नहीं बैठेगा, बट कहाँ से किस एंगल से बोल सकता है कि ये इंडिपेंडेंट कंपनी होगी. इसमें आप फॉरेंसिक इसमें डेप्थ चेकिंग करने लग जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा पैसा कहीं ना कहीं घूम के आया है, साइफन ऑफ हो गया, डाइवर्जन हो गया. सो दैट इज हाउ इट इज, यू नो. Now this is a very important thing, and I think we have just 10 minutes left, Vipul bhai. So I don't know I'll be able to complete or not पूरा. इसलिए quickly इसको run करता हूँ. ये बहुत critical चीज़ है, but maybe you can just go through it. So I've prepared this in a very unique format. Statement analysis जैसे सुनते हम तो T format याद आता है या verticals याद आता है, तो उसको overpower करने के लिए मैंने यहाँ पर hangers बताए हैं. Just like shopping हो रही है ना, आपको कौन सा पसंद है वो उठा लो. ये सबसे पहला hook. Revenue and debtors, these are different tests that you could do, you know. Perform analysis on sales. So with each this I have a case study, so मैं usually वो cover करता था, but due to this want of time we cannot do it. And you know even I am keen to hear Mayur bhai, and फिर हमारे WRC office bearers भी आएंगे. So today is gonna be, I think, you know, the chairman has really done a great job in getting the entire team today, so that interaction should also be have. And maybe we can, if Vipul bhai, we can do forensic audit part 2, एक सेशन और रख सकते हैं. हम देर लॉकडाउन में तो क्या है, बारिश हो सांबर बड़ी हो तो अपन तो बैठ जाएंगे यार, और क्या. इधर आना पड़ेगा सर आपको. राइट. So I'm just trying to cover as much as I can before you know मयूर भाई को हम बुलाएंगे. So this is the first hook, revenue and debtors, growth percentage of debtors vis-a-vis revenue, export sales made, domestic sales made, and very important, map, start mapping transactions with related और connected parties जो आपने characters identify किए हैं. आप ये देखोगे कि यार कहीं ना कहीं वो सर्कुलर हो ही रहा है, और या फिर कहीं ना कहीं एक विशेष सर्कल, हमेशा एंट्री कैसे बनती है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से मालूम पड़ जाएगी. उसके बाद उसके पास, और उसका एग्जाम्पल भी है. सो आई विल टेक इट अप. Next is purchasers and creditors. Purchases and creditors. Top 10 creditors plot कर लो आप. उसमें आप देख लो कितने अपने कैरेक्टर जो ओरिजिनल स्टोरी के हैं वो कितने बैठते हैं. बस वो आप वो उसमें स्टार्ट कर दो एनालाइज करना. सब फर्जी होंगे या सब में कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी. वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दैट. मशीनरी रॉ मटेरियल बोला आ रहा है, पर कुछ ट्रक के नंबर्स देख लो. अभी तो आरटीओ का वेबसाइट भी ओपन हो गया, सब कुछ कर लिया. इनफैक्ट आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आल्सो वी वर द वन ऑफ द फर्स्ट फर्म्स to start analyzing through RTO forms way back in maybe before 2 years. We identified in Gujarat एक बहुत बड़ा forensic audit हमने किया था जिसमें वो बहुत बड़ा सामान, इतना सारा सामान लेके जा रहा था. तो हमने आइडेंटिफाई किया है, तो वो देखा तो वो एक छोटा सा टेम्पो निकला था आरटीओ के. जब हम लोग ने उसके बहुत खर्चा किया था हमने, फिर तब जाके वहाँ से दिस बिकेम अ पॉपुलर टूल, एंड यू नो आरटीओ स्टार्टेड ओपनिंग अप देयर डेटाबेसेस फॉर एवरीवन. इनफैक्ट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना, तो होम मिनिस्ट्री से हमको एक उस पर एप्रिसिएशन भी मिला था. सो ऑल ऑफ दिस हैड बीन डन, यू नो. सो बहुत इजी होता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया नेचुरली ऑकरिंग डेटा है तो आप ठीक रहेगा. आर्टिफिशियल है तो आप और मेरे जैसे कोई ना कोई आदमी बना रहा है. हमारी क्या है, सीमित क्षमता है. मतलब तो मैंने 10 नंबर ट्रक के बनाए, 10 नंबर ढूंढे, MH AB इतने बड़े कैरेक्टर्स बना के. अब मेरे को मिल रहा है 2 पैसा इसमें कमाने के लिए.
जो कमीशन लेते हैं, जो कंसल्टेंट जो पैसा घुमाते हैं या एंट्री वेंट्री कराते हैं, उसका 2%, उसमें से छोटा सा अमाउंट मेरे को सैलरी मिलता होगा 20,000 25,000 रुपये, तो मैं कितना दिमाग लगाऊंगा पेपर्स क्रिएट करने में? तो एक ही ट्रक सीरीज के नंबर आप बार बार रिपीट करते जाओगे प्लस माइनस। तो आप हमारे पास हमने जो एक दो एग्जाम्पल ये किए थे फॉरेंसिक, उसमें तो लिटरली 10 नंबर्स 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर वो रिपीट हो रहे थे। वी कुड इजीली मैप इट, यू नो। अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय फर्म, और रैंकर हु जस्ट जॉइंड इन, बोला कि मेरे को सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, मेरे को काम नहीं करना है आपके साथ, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आपको एक्सपोजर चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट का क्या है क्या नहीं है, आई वांट टू सी। एंड ही डिड अ फिनोमिनल जॉब, यू नो, फिनोमिनल जॉब ही डिड विद अस। बस उसने ये फाइंड आउट करके दे दिया, सर ये तो पूरा पैटर्न दिख रहा है, यू नो। related party transaction is one another hook that you should always take care of, जो अपन ने ऑलरेडी इतना डिस्कस किया है। एंड कैश एंड बैंक, ये मैं आपको एक और केस स्टडी में दिखाता हूँ। Now this becomes a very important case. अभी तक आपने मेरी जितनी भी स्लाइड्स देखी होगी, again as I said, everything that I've done on my slide has come with a thought process. Every little word, every little diagram, in fact these colors also that you see today, this is just to ensure that we are meeting after a long time. I don't know how many colorful things you would have seen, but this is just to ensure that you feel very good about these colors. And these all colors are certified by a psychologist, even in Microsoft also. And I have put that template of these colors also. They are made to make you feel good, and you, when you feel these colors, you know, I don't know what psychology say, so therefore I've used this, and I really help and really pray that these colors really be colors in your life also. So discrete source inquiry. So यहाँ पर मैंने, आपने देखा ये स्लाइड मैंने खाली रखी है, एक कोना पूरा खाली रखा है, दो बड़े स्पेस इधर पूरा फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बट ये साइड खाली रखा है। बाकी और कई स्लाइड आप देखोगे पूरी भरी हुई है, स्पेस्ड आउट। व्हाई? बिकॉज दिस इज दैट ब्लैंक स्पेस वेयर इन योर क्रिएटिविटी कम्स इन। इसको मैं भर नहीं सकता, you only have to do it. This is public domain research and investigation. You have to do it in the best manner possible, something out of the box for your friend, your relative. The more you live into that engagement, you will find out. Yeah, ऐसा टाइप का है, this is how it will come. So let me end there. So these are some of these public domain searches: company registration, line of business, net worth, pattern. So these are things that you should really plant into. Discrete source of inquiries are there: vendors, customer, current employees, ये वो. Vipul, before I could end, I'll just need 2 more minutes if that's okay. Yeah, sir. हाँ, तो अपन इसको यहाँ पर एक मैं कर सकता हूँ, but this is one case study that I want all of you to test yourself. Let's see your investigative mentality if it has evolved yet. What are the mistakes that you can find out in this photograph? You know, there are some 7-8 mistakes here. So you maybe just don't unmute yourself, but just keep on chatting with us, and we'll see what all can you find out. Let's be a little quick, friends, so that, you know, we see. Unmute facility allow कर दिया है. If anybody unmute मत करो, just type. No, I think that expression would be better. Unmute में थोड़ा सा disturbance हो जाएगा. Let's not unmute. Let's just type in the chat box क्या क्या आपको दिख रहा है. Let's see if you can really find out some mistakes in this image. Shailesh Jhamar sir, pocket dictionary, absolutely right, sir. You are right. Shailesh Jhamar, ये pocket dictionary बड़ा है. It is not a pocket dictionary, so yeah, that is one mistake, right? Deepak Jhamar sir, also the same pocket. Pocket? कौन सा pocket? Are you talking about dictionary or pocket? Anmol Makhwani, the guitar. What is wrong with the guitar, Anmol? Please specify. Ankit, tiger has horns. Very good observation. Those tiger on the top left, it has horns. Yes, that's wrong. Right. Come on, people. Come on, more of them, yeah. Pet on sofa. Sir, pet on sofa में क्या problem है? Mayuri Bhatt madam. Pet on sofa, it's okay, no? Sofa आ सकता है. Tarun Saraf, clock. What is on clock? Pawan Jaju sir, yes, you are right. Pizza, leaning pizza is not leaning. Yes, that is right. Vaishnavi Hurkat madam, window panes opening in opposite directions. Hats off. Amazing. Pratyush Budra also, windows direction. Yes. Amazing, yaar, amazing. ये observation आना बहुत मुश्किल होता है,
one of the most difficult observations. Great Vaishnavi Urkat. Anmol, the string part is kind of sitar. Yes, you're right. Guitar mein lower is guitar, but upar sitar hai. So that is wrong. Correct. Bhagyashri Tiger. What is Bhagyashri? मतलब Tiger क्या? You have to tell. Tiger horns has Tiger. I think Jawar sir ने already cover कर लिया है. Come on, friends, more. You're not looking properly. इसमें दो observation है which are the most difficult and most critical. अगर if someone can, it will really help make me very happy. If someone can come up with that. Deepak sir, hanging tower. वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, हाँ वो पवन जी ने अभी बताया यस कि दैट टावर इज नॉट लीनिंग. यस अभिषेक, वेरी राइट. द बॉय स्लीव्स वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग. यस दैट इज रॉन्ग. दैट इज अ मिस्टेक देयर. यस Anmol, the scissors. What is wrong with the scissors, Anmol? There's nothing wrong with the scissors. Come on friends, come on. एंड करना पड़ेगा नहीं तो ये सेशन. मतलब ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन फाइंड आउट. सुनील भाई, चेस बोर्ड, यू आर राइट. वेरी वेरी वेल नोटिस्ड. मुकेश सर, यस, बटरफ्लाई इन एन एक्वेरियम. वेरी वेरी वेल. Vrinda, you're right. Tail of pet sleeping on sofa. Yes, the tail is of a tiger. Mayur sir, book below typewriter. What is wrong, sir, there? Might be he want to start the session, sir. It's a tool. So Sunilji very rightly mentioned the chessboard is short of a grid. It should be 8 by 8 grid, but it's less. Yes. So I think we can then end over here, or agar response nahi aa raha hai. So these are the answers. So the most important critical ones were the 6th and related to the time. Is sunset हो रहा है और time देखिए क्या हो रहा है. And 8th, one shoe is missing. Either shoe nahi, either shoe hai. Rest, I think all of you got everything. These were the most important thing, but unfortunately, I don't know, maybe the rains are too hard that we couldn't focus. So, Riddhi Malpani, no, there's no stick in back of ball person, so it shouldn't run. Okay, no problem. Calendar, yes, you're right. Someone posted about calendar, but I thought it is too very too difficult to talk about that calendar. That calendar is hanging below. Never a calendar can be below this portrait. So there is something wrong there. और उसके पीछे वो stick है, मतलब that shows a table होनी चाहिए, पर वो table कहीं है नहीं. So what is it resting on? That is a very strong inference that you can draw with this image. So anyways, that's it. Maybe if required, we could cover it up maybe later whenever Vipul Bhai or the managing committee gives us a chance to. Let me stop my sharing over here. So there are almost around equivalent number of slides left. In fact, case studies and modus operandi is left. So maybe at another time we could cover it. So right, that's it from my end as of now. Part 1. Season 1 is over. Season 2. We'll wait for season 2. In fact, good. We'll get with the suspense. We'll get more people than for season 2. Thank you, Arpit sir. It was really superb and fantabulous session, sir. Thank you, sir. Now should we have a query, Arpit sir? We can have it later on. I think session 2 बाकी है, so I'm hoping मैं भी थोड़ा सा bargaining power रखता हूँ. Question and answers हम session 2 के बाद लेंगे. So we can just park the queries, and of course Mayur sir is here, so we should hear him. And friends, believe me, please keep noting everything down, and that is how it will be helpful for each one of you on this. And a lot of things that can happen in your real life if you follow whatever that we've covered up so far. Thank you, sir. Vipul sir, should we start with the second session? Yes, sir.
Thank you, Arpit sir. Arpit sir, please stay connected with us. Yeah. For second session on research methodology, we have with us CA Mayur Jawar sir. I welcome you, sir, on behalf of Amravati branch of WRC of ICI. Welcome, sir. I request Saket Bhai to please introduce our Mayur sir. Although he do not need any introduction, but as a part of formality, please introduce him. Okay, sir. Good afternoon to everyone present over here on our today's second virtual session on research methodology tools for CAs. I, CA Saket Mehta, would like to introduce this session scholar speaker, CA Mayurji Jawar sir. It's honor for me to introduce such a scholar speaker in front of you all. CA Mayur Jawarji sir is a qualified chartered accountant and practicing since 2002 and is a senior partner of C. Kaloti and Lathia. He has done BCom from Mumbai University and was also merit in HSC exam. He has qualified as diploma in system audit and diploma in insurance and risk management conducted by ICAI. He has been delivering lectures on indirect taxes, GST, a project setup at various business forum, CA branches and educational institutes. He is taking startup sessions as a freelancer at ICAI, Amravati branch, engineering colleges, and various educational institutions. Along with educational qualifications, he has interest in lawn tennis, dance, and mimicry. He has been writing regularly on traffic awareness, GST implementation, infrastructure development, and represented to government authorities for business problems and social issues. He was the founder secretary of Amravati CA branch, founder committee member of Amravati Management Association, and founder president of JCI Centurion. Now, let me welcome our today's scholar speaker before you for presenting his ideas on this topic. Thank you, sir. Now, over to CA Mayuri Jawar, sir. Thank you very much for such a wonderful, excellent introduction. Thank you, sir. Thank you, Vipul Bhai, Pavan sir, and managing committee for giving me a chance to share my views on this new topic of research paper preparation. It was fantastic hearing Arpit sir. He was with us, and I think members were quite excited to hear him and continue hearing. But he has made this atmosphere for season 2. So I think it's that impact of web series on all chartered accountants on this. So I'm giving this responsibility to share something on this research paper. Friends, hello, will I am permitted to this screen share? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Is my screen visible? Yes, sir, visible. Okay. Thank you. So here we are having actually, see, I'm not that person who's doing a lot of research, but recently the WRC committee has given me a chance to, they have opted me as one of the member of this research committee, which is being run by WRC, led by our Honorable WRC Chairman Lalit Bajaj sir. So after discussion with them during this research committee meetings, we came to know that a lot of things can be done by our members in this research direction actually. Generally होता क्या हम लोग research activity को थोड़ा सा इस तरह से सोचते हैं कि it's an activity which is generally it should be taken care by all generally senior members जिनको बहुत समय हो गया है या जो सिर्फ literature या reading में believe करते हैं उन सब चीजों के लिए. No, this is not the perception we should have with respect to research. Research बहुत change हो गया है. As my opinion, research is altogether a specific professional area as well as separate domain area where we can have good skill development. हम लोग नई एरियाज में रिसर्च कर सकते हैं, अपने लिए वर्क बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स which we are having with respect to research. When we do research, it ultimately opens number of segments for us. Understanding the problem and finding the solution for them. It's ultimately creating an opportunity for our members fraternity and that chartered accountants who is leading the whole task. So let me share a few of the slides. I'll be not taking much of your time.
because of the time constraint, but few of the slides which are prepared compiled. So what is all about research? There are many interpretation we are having for research. Any topic on the basis of theory, facts, hypothesis, and investigating the theories for new outcome. It's like a knowledge gathering endeavor to answer a research question, or it may be a process of systematic inquiry that entails collection of data, documentation of critical information, analysis and interpretation, and then finding out the whole solution for the whole problem. So these are all various actually ways we interpret a research project. So क्या है हम किस तरह से, so these are four types of interpretation we can get. The last one is a systematic inquiry, which I am very specific. A systematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomena. This is also one of the interesting definition. This is not something which institutes provided, which I tried to gather from of the resources. So what constitutes a research project? अगर मैं इसी बात को कुछ शब्दों में अगर precisely अगर हम लोग प्रोड्यूस करें कि what research project is, pose a question, collect data to answer those questions, and present an answer to your question. That is very important. Many times people think that research is something just to identify the problem. No, problem is there, but we have to end with some solution for that problem. So where there is a solution, there is a work, there is opportunity, there is positivity, there is growth. So we can correlate our research into that direction. So pose a question, collect data to answer that questions, and present answer. This is very precise. Summarize अगर मैं करता हूँ research क्या है, तो ये तीन चीजों में research बटा है. Yes, ICI research project is fantastic. Our CA Institute is taking a great efforts in क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द रिसर्च एक्टिविटी. आप देखते होंगे हर मेंबर को कहीं ना कहीं मेल ड्रॉप होता है रिसर्च पे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेल एक्चुअली वी रिसीव फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. दैट इज दे आर प्रमोटिंग फॉर द रिसर्च एंड मेनी टाइम दे ask for feedback on the research done by the committee specifically on specific related to task. बहुत बार शायद हम लोग हमारे बिजी स्केड्यूल में या जो भी चीजें हम लोग सोचते हैं यार कोई कर रहा है, कोई वो कर रहा है तो हमें बाद में मिल जाएगा. एंड वन फाइन डे कुछ होता क्या है, द रिसर्च इज अल्टीमेटली मेड इनटू सम, एक उसका कुछ बनेगा बाद में, एक प्रोडक्ट बनेगा. दैट मे बी अ लॉ, दैट मे बी अ एक्ट, दैट मे बी अ गाइडेंस नोट, कुछ भी हो सकता है. दैट मे बी अ, तो रिसर्च का एक एंड प्रोडक्ट है. लेकिन फिर हम कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट में यार ये इनपुट्स रह गए थे, ये तो पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया, कब हुआ. तो रिसर्च इज मेनी टाइम बेस फॉर दिस ऑल guidance note or something coming from institute every now and then. So research is a actually foundation for the whole activity. कौन करते हैं? So C Institute they are encouraging every now and then. आप देखेंगे, आप आपका मेल बॉक्स ओपन करेंगे, आपको दिखेगा कि इस पे आपको फीडबैक देना है. That feedback I will encourage members. So यहाँ पे कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि that research should one should take interest. यहाँ पे कोई एज या प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता है. Anyone who is doing, see when we try to participate in a research project, we think in an analytical way. हम सोचते हैं, हमारा विजन बढ़ जाता है, हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, and we try to visualize the whole problem. Or now the scenario is such that while interacting with our clients or industry or whole customers or what you may say, हमारा विजन तभी बढ़ेगा जब हम लोग ये रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे. इट विल अल्टीमेटली हेल्प इन इंक्रीजिंग आवर विजन. आपका जो ब्रॉड विजन रहेगा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू शेयर दैट इनपुट्स टू योर क्लाइंट्स और योर मेंबर्स आल्सो. सो क्या है रिसर्च? टू प्रमोट रिसर्च ऑन थ्रस्ट एरियाज में आपसे आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द एरियाज व्हिच हैव बीन स्पेसिफिकली गिवन बाय सी इंस्टीट्यूट. It is also to encourage experienced chartered accountants, faculty of reputed academic institutions. All CAs and even reputed academic institutes, faculties be here, they are also being encouraged to submit the research project useful for the regulators and policy makers. See, research is very big. एक research paper अगर आप करते हैं and that is finding some value
तो वो इंडस्ट्री का एक पार्ट बन जाएगा, उस पे से शायद कोई पॉलिसी क्रिएट हो सकता है। देन देयर इज बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बीएफआई है, सेगमेंट्स है, रेगुलेटरी बोर्ड है, सेबी है, देयर आर नंबर ऑफ रेगुलेटरी बोर्ड, बट अ रेगुलेटरी बोर्ड इज आल्सो हैविंग सम कंटेंट। कंटेंट क्या है? जब तक मैंने मार्केट का कोई रिसर्च नहीं किया, आई डिडंट रिसर्च द होल प्रॉब्लम इन एक्चुअल सिनेरियो, द ओरिजिनल सिनेरियो, ग्राउंड लेवल पे जब तक हम उसका काम करके प्रॉब्लम रूट कॉज नहीं निकालते हैं और उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, डोंट ट्राई टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन फॉर दैट, कोई भी रेगुलेशन भी नहीं बन सकता है। right now we are having a good work going for this privacy data protection also। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा प्राइवेसी डेटा से प्रॉब्लम पता चल रहा है, और देयर आर गाइडलाइंस वर्ल्ड ओवर, जिसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक लेजिस्लेशन इंडिया में बनाने वाली, कुछ समय में आ जाएगा वो भी। सो सम रिसर्च इज देयर, रिसर्च वर्क हुआ है, तब वो लेजिस्लेशन के फॉर्म में आने वाले समय में होगा। तो इंस्टीट्यूट क्या करे? इंस्टीट्यूट दे आर प्रमोटिंग, they are encouraging, promoting, because our our institute is a ongoing learning process। हमें continuous learn करना है, और the way technology is changing and we have to adapt in this new technology atmosphere। से कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कल जाके कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ आ गया कि हाउ वन शुड डू द अकाउंटिंग इन क्रिप्टो करेंसी और व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। सो कुछ रिसर्च का बैकग्राउंड लगेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से उस पर काम हो सकता है। So I'm just trying to share one of the background. So this is all out of background। जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, यू आर अवेयर कि ट्रेडिशनल वे और अभी की वर्किंग में और पोस्ट कोविड, तो आई थिंक देयर इज बिग चेंज इन द होल वर्किंग एटमॉस्फेयर। सो अल्टीमेटली इट विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस रिसर्च एक्टिविटी। इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, यस, क्या इम्पैक्ट है? यस, मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग आईसीआई सर्विस। हमारा रिसर्च अगर अच्छा रहा एंड इफ इट इज फ्रूटफुल टू बोथ द सोसाइटी, so we don't have to think in a isolation way। A research should be something that it should be beneficial, it should give some value addition to the society। हमारे स्टेक होल्डर्स को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर है, सोसाइटी है। अगर हम हमारे रिसर्च में वो आइडेंटिफाई करके देते हैं, there may be a situation where a chartered accountant is not directly related to that activity, but it is giving some value addition to the society। That is very much important। और जहां पे वैल्यूडेशन किया, आपने अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा दी, आपने इंस्टीट्यूट की वैल्यू बढ़ा दी। इंस्टीट्यूट इज गिविंग एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल जर्नी, helping many organizations in raising the bar of financial reporting, auditing, corporate governance, strategic management। And ICA has been extending its research-based service to number of organizations। See, when institute gets something research, अगर आप कोई research करते हैं banking sector में, so do you think that ICA will keep the whole research document with them only? No, they are going to share with the banking association, RBI। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये, और आपको ऑडिट के दौरान ये प्रॉब्लम दिख रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन आपको लगता है, जो भी है, चाहे इंटरनल ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट ऑडिट, रेवेन्यू लीकेज की कुछ प्रॉब्लम्स है, सिस्टम की कुछ फ्लॉज है, and you know that this is the problem, these are the findings, and there is some solution also। And ultimately, see, if there is a problem and you are finding the solution, there is a demand for that research product। तो ICI क्या करेगा, जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे भी शेयर करेंगे, and they will take the feedback of that institute also। And fortunately I have seen that institute is working fantastically in the research segment, and they are promoting every now and then, and lot of other institutes, organization, regulatory body are just dependent on what inputs our institute is giving to them। अगर कोई मेंबर सोचेगा मैं अमरावती में बैठा हूँ, मेरे इनपुट से क्या फर्क पड़ेगा, यही सबसे बड़ा बिगेस्ट फॉल हो जाता है हमारी सोच में। हम सोचते हैं यहाँ, लेकिन मेरे आई थिंक एट दिस पोस्ट कोविड और ये ऑनलाइन ई लर्निंग में हम समझ गए कि योर प्लेस इज इमटेरियल, योर वर्क इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आप कहाँ बैठे हो कोई मायने नहीं रखता है, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं सिस्टम को, देन दैट इज द सॉल्यूशन। मुझे लगता है ये मेरी बात वेरी स्पेसिफिक कहना था मुझे, कि हम लोग काफी बार सोचते हैं मैं क्यों, और कोई कर सकता है, बिकॉज वी थिंक दैट रिसर्च इज नॉट प्रोडक्टिव, नॉन रिम्यूनरेटिव। ये हमारा पहले से एक इंप्रेशन बन गया है कि ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, और हम लोग हमेशा रिम्यूनरेशन एंड रिवार्ड के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं। तो उसके लिए भी कुछ है हमारे पास, लेट मी शेयर दैट आल्सो, बट लेट्स मूव फॉरदर।
So in which areas you can do research? So these are some of the areas which our CA Institute is promoting. Tax, we are working in tax activity, tax reforms, revival of economy, integrating reporting, rotation, auditors, accountancy, impact. The last line is quite important for me, I think. Impact of dispute resolution scheme, CSR, research studies on NGOs, startups, technology is missing here. See, this is not something which is uh, all recommended. You can add any area. What institute saying these are the some of the recommended area. पर मुझे लगता है ये बहुत पुरानी बात होगी. बहुत नए areas है जिसमें हम लोग खुद काम कर सकते हैं. And there are very niche segment also where no one has focused, and where no one has focused yet, that is the main area we should concentrate. ऐसे segment में काम करिए जिसमें कोई नहीं है. Try to identify the problem. Government sector, social sector, trust, NGOs, startups, technology, education, edtech. अभी education का तो e-learning. This is all new areas. अभी बताइए स्कूल सब ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उसमें क्या मॉडलिटीज हो सकती है, क्या चेंज हो सकता है, e-commerce एक्टिविटी कैसे हो सकती है. See, any field, we have to think about some field, identify the problem, keep yourself in that और situation आप रखिए, और then visualize the problem. Just problem create नहीं करना है. We have to think if there is problem, you have to go deep in that, और उसमें सर्च करना है थोड़ा सा. मेरे हिसाब से उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग. Let me share here. I will always recommend to work in collaborative way. होता क्या है, research is very big task also, जिसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग डोमेन से अगर हमको इनपुट्स मिलता है तो it goes in a fantastic way. So क्यों ना हम लोग 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके अपने अपने लाइक माइंडेड लोग मिलके एक कुछ एक्टिविटी साथ में लें, एंड वी ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन दैट फ्रंट, create something good value added concept for our institute, for our fraternity, and as an individual also definitely. Because आपने जब रिसर्च प्रिपेयर करना है तो आप किसी के गुड बुक्स में है, कोई आपको नोट कर रहा है, कोई आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहा है, एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव रिवार्ड एंड remuneration will automatically follow. ये मुझे लगता है, because आपने उस लेवल पे वर्क को लेकर गए तो you are pioneer in that work, तो people will appreciate it. और शायद हो सकता है कि जब कभी भी उसका implementation होगा, you will be called upon, you will be asked to just be part of the first team. ये होता ही है, इस तरह से होता ही है कि भाई आपने इसको रिकमेंड किया. Why we see many times big fours are there in many of the implementing areas. आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे वर्क एरियाज में जो नए इंप्लीमेंट होता है, हमेशा उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो कोई बिग फोर का ही किसी का बनाया होता है, ऐसा देखा है जनरली. व्हाई? बिकॉज दे टेक द पेन ऑफ डूइंग द रिसर्च एक्टिविटी फर्स्ट. वो पहले इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम एनर्जी देते हैं, एंड देन दे ट्राई टू विजुअलाइज. होता है उन्हें कि बाद में शायद इसकी रिटर्न रिवार्ड्स हमको मिलेगी, एंड दैट विल बी क्वाइट बिग नंबर्स. सो दिस आर सम ऑफ द एरियाज. Eligibility criteria, institute says 10-year post qualification, at least 10 years of a chartered accountant. Don't get depressed. ये सुनते से जो youngsters है जो अभी qualify, please don't leave the session. Okay. The reason being, नीचे क्या दिखा है? If the project is so important, so interesting, the age criteria is not a binding on our C institute. और हमने I still recall जब मुझे 6 या 7 साल हुए थे, I made a submission to C Institute. तो on merit they selected it and they even reverted me that आप इसमें आगे बढ़िए. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, यूनिक है, and you are trying to something, visualizing something new, and you are identifying and solving that problem and doing some research. Institute is very open arm के साथ आपको स्वागत करेगी. No, nothing worry. So age is not a big issue for us. What project should have strategic in nature and a strong research dimension. Yes, प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूट स्क्रूटिनी करेगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमने प्लैगरिज्म करके या कॉपी पेस्ट करके कुछ डेटा इनपुट्स कर दिया है एंड यू आर जस्ट फॉरवर्डिंग द मटेरियल टू इंस्टीट्यूट. इट शुड बी एन ओरिजिनल कंटेंट. इट शुड हैव some efforts, it's big efforts. Lot of efforts will be required, your team, your strategy. In fact, I'd like to share also what will be the strategy for preparing a research document. And the
Recommendation of the expert committee will then be placed to the research committee for its final approval. The procedure is very fast. जैसे कि हम लोग कहते हैं एनसीएलटी में सब टाइम बाउंड है, so I would like to appreciate here that institute is also having a time bound mechanism for this research activity. ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च करना है तो 2 4 5 साल आप करते रहेंगे, नो। रिसर्च का वैल्यू तभी होगा जब वो टाइम बाउंड होगा, और जब तक वो टाइम बाउंड नहीं होगा आपका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। मेंबर विल बी इंटरेस्ट ओनली इफ इट इज टाइम बाउंड, एंड आई थिंक देयर इज द प्रॉब्लम विद अस। हम लोग ये टाइम बाउंड एक्टिविटी को काफी बार शायद नहीं परफॉर्म कर पाते, एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट डोंट टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड वी डिसकंटिन्यू मेनी टाइम आफ्टर स्टार्टिंग, बिकॉज हम लोग टाइम बाउंड एक्टिविटी को, बिकॉज इट्स ऑफ द ट्रैक ना। हमारे रूटीन टैक्सेशन, कंप्लायंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जो भी वर्क है ऑडिट्स वगैरह के साथ में साइड साइड का एक हमने वर्क स्टार्ट किया था, असाइनमेंट ले लिया था। लेकिन वो असाइनमेंट को जब तक आप दिलो दिमाग से और पूरी शिद्दत से जब तक आप एफर्ट्स नहीं लोगे तो आपका वो प्रायोरिटी में नहीं आएगा। दैट प्रायोरिटी नीड टू बी देयर फॉर रिसर्च। आप उसको कैजुअल अप्रोच नहीं लेना। इफ यू टेक अ कैजुअल अप्रोच देन सभी स्टेक होल्डर्स का भी कैजुअल रहेगा, इंस्टीट्यूट का भी शायद कैजुअल अप्रोच रहेगा, बिकॉज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिसर्च पेपर सम और अदर वे। जैसे हम एफर्ट्स लेंगे उस तरह से हमारा रिसर्च पेपर बनेगा। ड्यूरेशन, द इंस्टीट्यूट सेज द ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम बाउंड है 6 मंथ्स। इट्स गुड अनलेस एंड अंटिल सम स्पेसिफिक मोर स्ट्रेटेजिक वर्क है, आपको और टाइम ड्यूरेशन चाहिए, आपको आर&डी करना है, सम पीएमआर इज देयर एंड यू नीड सम मोर वन एंड इंस्टीट्यूट satisfied in giving you more time, then they permit more than 6 months also. Now the good part, what is motivating is the knowledge you are gaining, and the second, monetary wise, reward wise, it's not something that you are paid the remuneration, it's something that a grant of rupees 10 lakhs per study research is being demarcated specifically by institute. All costs incurred for incurring or executing or doing that research activity, incurred, necessary or required for, even it includes for this traveling and other charges or some meeting you are facing, some purchasing some equipment, tools, getting the assignments, getting some reference work from other professional people, everything is being reimbursed by the institute. A maximum grant of 10 lakhs, and 10 lakh is a big amount. और हम लोग वैसे भी फिजाइल होते हैं, हम लोग ज्यादा हमारे से खर्चा होता ही नहीं, so we are definitely going to save the money of our institute, our अल्मा मैटर डेफिनेटली। लेकिन एक वो बॉदरेशन नहीं रहेगा कि शायद इसका हमें कोई कॉस्ट तो एडिशनल बियर नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर दैट सेज इंस्टीट्यूट इज सपोर्टिंग एंड इट इज अ गुड अमाउंट। सो 10 लाख इज अ बिग अमाउंट, सो आई डोंट सी अ बिग प्रॉब्लम। बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे कि और सी नाउ इट्स मेनी ऑफ द टाइम काम करते थे कॉस्ट ज्यादा होती थी। There are now number of papers, work, online, बहुत सारा चीजें हम लोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, एक्सेस फास्ट है, तो ये कॉस्ट उतनी भी लगती नहीं है। So whatever will the cost, max 10 lakhs is reimbursable. Sanction process of grant, that is the whole grant process. Normally कोई भी इंस्टीट्यूट में एक मैकेनिज्म होगा, it's okay, it's not that complicated. हमारे सी इंस्टीट्यूट या जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं, हर तरह से ग्रांट प्रोसेस होती है, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू स्पीक मच ऑन दैट। मॉनिटरिंग, रिक्वेस्ट मेड to applicant to provide the details of the work done remaining the draft of the project. Research committee would evaluate the implementation and progress. The progress made by the research is satisfactory. If yes, they will tell continue the project. If no, they will tell withdraw the project, unless and until you are counterfeiting it. Okay, no, we are having the same different solution answer. So it's a simple mechanism. It's a very simple mechanism, and I think I'll recommend, in fact, one should go this process, because इसमें हमारा एक विजन बहुत बढ़ जाता है, सोचने का नजरिया बढ़ जाता है। हम लोग जो कभी कभी कंप्लेनिंग एटीट्यूड में काम करते हैं, शायद वो भी हमारा चेंज हो जाता है। वेर यू फील दैट यू नीड टू कंप्लेन, आई थिंक देयर वी नीड टू फोकस मोर, try to find out the solution. So the institute is just working as a representative. All council members, regional council members, they are a representative. हम लोग उनको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो उसका बाद में कुछ बनेगा,
they will try to bring out the solution for everyone. So it's our duty also to just be part and parcel of our institute. Even though we are not elected, we can perform our duty in a fantastic way by way of research activity. And in fact, I will tell that we can contribute in a much better way by way of research. आप मैंने कभी नहीं देखा हमारे इंस्टीट्यूट के किसी काउंसिल मेंबर्स को कि किसी ने डिस्करेज किया है. यस, दे आर सो पॉजिटिव कि आप करिए, मोटिवेट करता है. देखिए, कुछ लोगों से थियोरेटिकल वर्क होता है, किसी लोगों से फील्ड वर्क होता है, किसी से एनालिटिक थिंकिंग होता है, किसी से अलग अलग अपने डोमेन में कोई एक्सपर्ट है. कोई एक्सेल में एक्सपर्ट होगा, कोई विजन में एक्सपर्ट होगा, कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है. सो माय रिकमेंडेशन विल बी ऑलवेज टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव वे. कुछ ग्रुप बनाइए और शायद हम लोग अमरावती ब्रांच की ओर से भी कुछ फैंटास्टिक रिसर्च प्रोजेक्ट आने वाले समय में दे सकते हैं. ऐसा कुछ हो सकता है. सो एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, दैट पेपर विल बी पब्लिश्ड बाय आवर इंस्टीट्यूट, जर्नल सब जगह जाता है और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज होता है. यू आर अप्रिशिएटेड. वेयर देयर इज अप्रिसिएशन, everything, satisfaction, reward and remuneration, everything automatically follows. और मेरे ख्याल से सभी लोग कोविड, पोस्ट कोविड थोड़े फिलोसॉफिकल तब हो ही गए. तो मेरे ख्याल से ये जो एक सेटिस्फेक्शन की जर्नी है वो शायद रिसर्च में हमें बहुत फैंटास्टिक मिलती है. So dissemination of best practice and launching, implementation of result, policy oriented seminar, workshop, exchange. जब आप रिसर्च करते हैं, you just don't stop doing only the research activity. Meanwhile, you can continue speaking on this topic, forums में, seminar में, institute में, professional forums में, बहुत जगह आपको एक avenue भी मिलता है कि you can showcase yourself, your knowledge. And ultimately what you are doing, you are trying to network with our professional society, fraternity and the business class also. ये एक नेटवर्किंग का तरीका भी है. अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर मैं कहूँ तो ये भी एक तरीका हो गया है. आप किसी के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं, तो वो आपको हमेशा गुड नोट्स में रखेगा. वो बोलेगा ओके, यू आर टेकन सम एफर्ट्स फॉर मी. भले उसका रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव वो आपको काउंट करेगा. ही विल बी इंटरेस्टेड इन शेयरिंग हिज प्रॉब्लम आल्सो टू यू. आप कोई अगर कोई एग्रीकल्चर का कोई प्रॉब्लम निकालते हैं और उसका आइडेंटिफाई करते हैं, देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, वो शेयर करना चाहेंगे. दैट में क्रिएट सम अदर अल्टरनेटिव, सम अदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू आल्सो. ये भी एक तरीका हो गया रिसर्च में. So कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मेंबर्स, ये जो मैं अभी आपसे कह रहा था, एंड ऑफ द टारगेटेड बेनिफिशियरी. यस, कैपेसिटी बिल्डिंग है, नेटवर्किंग होता है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है, खुद के लिए भी हो जाती है, सबके लिए भी होती है डेफिनेटली. And networking is very big thing. Yes, tips on how to do a research project. So select the right topic. ये एक स्टार्टअप के जैसा है. स्टार्टअप को समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है. तो सेम ऐसा ही कि रिसर्च करना है. आई कांट गो इन द मार्केट टुमारो एंड जस्ट कि भाई रिसर्च करना है, रिसर्च करना है. आपको कुछ अपने आसपास के इर्द गिर्द जो भी प्रॉब्लम्स, यू जस्ट थिंक अबाउट इट. ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. जो आप ऑडिट्स कर रहे हैं इतने सालों से, उसमें कुछ आपको दिक्कत हो रही है क्या? कोई कंसल्टेंसी में आपको प्रॉब्लम है क्या? कुछ सब्सिडी में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उसमें कुछ लूपहोल्स है क्या, जो शायद हम लोग अगर कवर अप या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हमारे इंस्टीट्यूट को हम दे सकते हैं और खुद के लिए भी दे सकते हैं. सो सिलेक्टिंग द राइट टॉपिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क. हैव अ क्वेश्चन आस्क और योर एक्सपर्ट. ये जो पूछने का जो तरीका है, शायद थोड़ा बहुत हम लोग रेजिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ बिग 3 लेटर प्रॉब्लम, ईगो. काफी बार देखा जाता है. नो, थोड़ा रिसेप्टिव और गुड लिसनर बनेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. आपको कुछ वर्क करना है, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक द लीड, यू हैव टू आस्क द पर्सन जो प्रॉब्लम में है उससे भी, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है उससे भी, और जो सारे स्टेक होल्डर है वो रिसर्च से उनसे भी. मैं आपसे बहुत दिल खोल के कहना चाहूंगा, जब आप इंटरेक्शन करेंगे ना दोस्तों, आपको इतना फैंटास्टिक फीडबैक मिलेगा. आपको पता चलेगा शायद प्रॉब्लम ये नहीं था, कुछ और ही प्रॉब्लम था, हम ही कुछ और प्रॉब्लम समझ रहे थे. तो ऐसा भी होता है बहुत बार. सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द रिसर्च एक्टिविटी. जो इसको हम प्रॉब्लम समझते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होता है. कीप योर प्लान रियलिस्टिक. टूल्स एंड रिसोर्सेज. भाई देखिए, आप किस डोमेन में काम करते हैं, सीए है, अकाउंट है, ऑडिटिंग है, टेक्नोलॉजी को आप कितना जानते हैं, और सिस्टम्स है, बैंकिंग है, आप उस डोमेन में काम करते ही नहीं और नोवेयर इंटरेस्टेड एंड डूइंग द रिसर्च वर्क ऑल टुगेदर न्यू. ये थोड़ा एक अनरियलिस्टिक हो जाएगा. तो जिसमें आप काम कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे सीनियर मेंबर्स हैं, बहुत कई सालों से अपने अपने सेगमेंट में काम कर रहे हैं,
आप उसमें से कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो आप कैन स्टार्ट ऑन दैट एक्टिविटी। तो यंगस्टर से उसको लगता है कि नहीं, मुझे अभी से लगता है कि ये प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। इसमें अगर बहुत रिसर्च हो जाएगा तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को। और ये आप सभी जानते हैं कि सभी सेगमेंट अपने यहाँ पे कोई बहुत फुल प्रूफ मैकेनिज्म में काम नहीं कर रहे हैं। नो वन इज वर्किंग ऑन दैट सेगमेंट। इनकम टैक्स में ईटीडीएस में 26 एएस आया है, अभी भी शायद स्ट्रीमलाइन है या नहीं, आई डोंट नो, बट इट टुक अ होल लॉट ऑफ 7 to 8 years वो पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म करने के लिए। पर किसी ने तो शायद उसके लिए एक स्टार्ट रिसर्च पेपर बनाया होगा। यस, so here we need to find out the problem and realistic, prepare a project timeline, time bound activity होनी चाहिए, form a thesis, right, right. I have been, I think just 5 minutes more I am having, I think मैं मेरे पास कितना समय है सर? Sir, 5-10 minutes, 5 to 10 minutes. थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ उसी दरमियान खत्म करने की। ओके, थैंक यू। WRC chairman Lalit sir and secretary CA Murtuza sir have joined us on the behalf of Amravati branch. I welcome you. हो Sir, please so pardon shall I for few stop minutes. here or I No, should sir. continue? We will continue, sir, and we will Okay, have short question answer session for our two okay, sessions. ओके सर, जस्ट टेक 5 to 10 minutes, जस्ट फ्यू मिनट। Yeah. अब इतना बना लिया है तो दोस्तों को बताने का मजा भी है। ओके, थैंक यू। Okay, sir. No problem. Sir. So right, so this is not the case. We see earlier it used to take a lot of pain for writing and drafting and typing और इसमें सब करना। Now there are so much of tools available, online tools है कि आप जो speech है, speech से text हो जाता है। There are I need not say all lot of tools available. तो हमारी जो speed है रिसर्च की वही अपने आप में बढ़ जाती है। ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैकेनिज्म अवेलेबल है, फैंटास्टिक रिसर्च एनालिटिक टूल्स अवेलेबल है, और आपके पास टीम भी अवेलेबल है, आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ भी रहता है बहुत बार आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो राइट ये लिखा जरूर है, लेकिन ये इसको फास्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके है। So draft of research paper, this is something which our institute has also recommended. What should be incorporated in research paper? Introduction, research question, hypothesis, theoretical framework, methodology, brief literature, your findings. What are your discussion? Discussion is very interesting. It will include even the PMR survey. आप देखते हैं ना सर्वे मंकी वगैरह सब चलता है, ये हम भी कर सकते हैं। गूगल से आप गूगल डॉक से आप खुद भी एक सर्वे बना सकते हैं। It's not that difficult. It's very easy. Has the hypothesis proven refuted? Applicability of the study, potential follow-up, limitation, recommendation, and conclusion. It's one sort of formula, structure given how we can frame our research paper. So these are some technical concept of research methods: exploratory, constructive, empirical. Considering the time frame, I will not just share, but these are something of weighted detail one, something more explanatory, some where there are something research which are quantified and qualified also. We have to justify our submission with respect to some statistical data also. It is very much required. Online, there are which I gathered today. It's something research tools are available online: To-Dos, EndNote, EduGeek Clubs, Jotero, RefWorks, Data XLR, Paperfile, Content Mine, Plagiarism Checker. See, Plagiarism Checker is also one of the tool available online where we can check whether it is an original content or something just is made copy paste from some earlier research paper. So such number of good tools are available in the market to expedite our research activity. So this was all about for this research activity from my side. I think Lalit Bajaj sir, our WRC chairman, has already taken a lot of efforts for encouraging members to initiate this research activity. He is promoting it every now and then and making, and in fact, जस्ट देखिए ना, अमरावती जैसे छोटी ब्रांच में भी हमको एक एनकरेजमेंट मिला है कि हम रिसर्च पे कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग कहीं पे भी हो, वापस से वही बात कहूंगा, वी कैन डू फैंटास्टिक वर्क विद फॉर आवर इंस्टीट्यूट, फॉर आवर मेंबर्स, फॉर आवर फ्रैटर्निटी एंड कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। सो ऑल दिस वाज ऑल अबाउट फॉर रिसर्च। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने रुकना चाहिए। एक सभी चीजें मेरे ख्याल से यहाँ पे कम्युनिकेट हो गई है मोर और लेस। आई थैंक अवर चेयरमैन विपुल भाई पटेल फॉर, मुझे नहीं लगा था
डेफिनेटली इतने लोग आप इंटरेस्ट लेंगे इसमें, आप लोग आए यहाँ पे सुने, और ये रिसर्च पे हम लोगों का एक यहाँ पे इंटरेक्शन भी हो गया सभी मेंबर्स के साथ से। तो सभी मेंबर्स से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई टू ब्रिंग अबाउट योर यूनिक स्किल इन फ्रंट एंड डू सम रिसर्च एक्टिविटी, या पेपर राइट करना शुरू कर दीजिए। सम और अदर वे शायद आज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन हम लोग वो फेज से गुजर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Mayur sir. Really a new era for all the members. I hope now Amrati members will also try to do research activity. Thank you, sir. Very first of all, thank you for sharing this session with Arpit भाई, because एक सीनियर मेंबर और इतना अच्छा उन्होंने सेशन लिया, उसके साथ मुझे कुछ मोहलत दे दी, मुझे लगा आज वही चलेगा फॉरेंसिक। थैंक्स अर्पित भाई फॉर, अगर आपका सेशन भी पूरा होता तो बहुत अच्छा, आई वुड हैव एंजॉयड इट, बट सॉरी फॉर इंटरप्रेटिंग यू डूइंग द कमिंग इन बिटवीन यू। On behalf of Amrati branch, I welcome Lalit Bajaj sir, RCM, and Murtuja Kachwala sir. I welcome you all on behalf of Amrati branch. Within 5 to 20 minutes, we will take the queries on both the session. Then we will go with the WRC interactive meeting. If any member is having any queries, he can type in Zoom group chat or can raise the hand so that we can unmute him and he can directly ask the query. Arpit sir, I have one query. Is there any booklet available regarding modus operandi of all the frauds and all, so that we can learn from that? Yes, for the fact there is one Central Vigilance Commission back in 2018 has come out with the top 100. So they have compiled with the basis of 100 frauds, top 100 frauds that they have seen in 2018. They have compiled a publication. I have it. If it all required, I'll share it with you. Maybe you can share it for the because it's also available on Google. So it's a Central CVC, Central Vigilance Commission ki report hai. It's a very, very good report and must read for all of us. And it is, the best part is it is sectorally classified. तो gems and jewelry, manufacturing, power, ये सब तो उन सब के ना उन्होंने बता रखे हैं कि क्या क्या किस तरीके से फ्रॉड हुए हैं। एंड जस्ट रीड इट विद अ वेरी इजी माइंडसेट, क्योंकि उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काफी खराब बोला गया है उस रिपोर्ट में। सो जस्ट गो वेरी इजी, यू नो। But can you share it with us so that we can also circulate to the Amrati members? Will do. Any other queries? Also, I would want to highlight that there is still till date there is no booklet or publication, since Mayur bhai already talked about research, and there is no publication yet on forensic audits, because as I said, it's just an emerging field. There has been financial frauds and forensic in financial cases was never heard of. It's a scenario that has just evolved in the past three, thanks to IBC largely. So, but I think very soon we'll have some good publication. And if all of you would want to look for one good publication that I've come across, a taxman publication, that is balance sheet decoded. Although it is a very dry book, if you were to read it alone, you cannot do that. It has to be done in a team, or someone is teaching you, or someone is reading and presenting a case study. It is only helpful for that. अगर खुद बैठ के पढ़ोगे, तो it would be very, it's a very heavy book. But it is all balance sheet decoded. A lot of insights on how can you find out financial irregularities in a balance sheets, and what are the tests and what all analysis can you do. It is by one of our chartered accountant only from Ahmedabad, GCP Pada. A very strong academician. So maybe that book can be really helpful if at all you want to read it. Okay, sir. Sir, one of the participant has query whether statutory auditor can be held liable if something is found wrong in forensic audit. Oh, absolutely. और liable नहीं, उसकी life खत्म हो सकती है. In fact, two of these statutory big auditors, I don't want to name them, are under arrest, and they are behind bars. Forget about disciplinary cases. They are charged with abetting a crime. They're charged with so there's one section also in civil procedure, civil code. So just like you are helping someone to do a crime, big crime, murder or something, even they are caught. Just like that, auditors are also being framed, and lawyers, believe me, they have
killed them overnight. Big names. I'm talking about big names. They are actually behind bars today, and it's a very bad situation here. So they can be held liable. Of course, membership can be struck off. Their names can be struck off from the register of members very easily. So if I may add to what Arpi said, Murtuza here, Yes, now there is 143.12 in the Companies Act, no? Yeah. As per 143.12, we are as a statutory auditor, you are required to, like, if you come across or if you have reason to believe and there is a suspension, and if you come across a fraud, then you're required to report to the central government directly. And if you don't do, then there is a penalty and imprisonment on the auditor as well. So 143.12 worth reading if you're signing a private public limited company, whatever comes under the Companies Act applicable. Yes. But that is prospective effect, so it's from now on. It's not retrospective. So earlier also, अगर आपने किया हो, तो ऐसा नहीं है कि you can save yourself. You can be. So in fact, in 3-4 cases in our own cases, statutory orders have been taken. In fact, in one of the cases, insolvency professional has also been handled very roughly because of his malpractices. So. Okay, sir. No more queries are there. So everything is clear to everyone. No, there will be. Pawan, there will be. I think, we'll definitely close the session. The investigative mindset is yet to evolve now. Yes. So, that will definitely happen. Yes, sir. Thank you, sir. Now let's move the third session, WRC interactive meeting. Both the sessions were superb and supersonic. Thank you, Arpit sir and Mayur sir. Thank you very much. Stay connected. Now I hand over the further MOC to our CA, Shrainik Botra. Over to Shrainik. Thank you, Pawan sir. A very hearty good evening to all the dignitaries and aspiring chartered accountants present in this virtual meeting. On behalf of Amravati branch of ICAI, I welcome you all in this virtual meeting. Every year at Amravati, we look forward for this interactive meet since we get the opportunity to host our torchbearers at WIRC at our very own Amravati branch. But unfortunately, due to COVID-19, this is not possible this time. We have lost the opportunity, but we hadn't lost the opportunity to hear from our torchbearers at WIRC. So once again, I welcome you all in this virtual meeting. Now, let us start with the interactive meet. I request Amravati branch chairman, CA Vipul Patel sir, to please present the welcome address. Vipul Patel sir. Thank you, Shrainik. Yeah, am I audible? Vipul bhai, you're audible. May I also request you, maybe we can stop the live recording here because this is just amongst us. Okay, sir. Okay. I'm stopping. Unnecessarily, we should not. Live streaming, sir? Live streaming or recording also? Live, no, recording you can keep. In fact, we can stop both that also. Live on YouTube.